अगला घूम ले दो और आगे ओ नहीं ना बड़े से दिखता ना ना सही ना खड़े हो तुम्हारे सही ना उठे तो बहुत फिर ऐसा फिर दखल मारे सी मैं तू क्या मैंने नहीं ना चलने लग जाएंगे तू क्या मैंने साफ में चलना अखंड अखंड मनो कमले Still building Mukul. Kolkata is coming. Original decision is not out. Pitching outside off. Impact in line. Wicket is hitting. Go back to until umpire Mukul plays. Mukul, you need to change your original decision of not out to out. Stand by. You're on camera. Make a signal. Well, he had 4 wild swings, did Shaheen. None of them connected, and now he is out. LBW and Kuldeep's bagged 2 in his last over. Shaheen Afridi gone without scoring. Pakistan in further trouble at 134 for 7. प्लीज इस पेज को फॉलो करें और अधिक लाइव क्रिकेट मैच दिखाने के लिए इसे लाइव दोस्तों के साथ शेयर करें। प्लीज इस पेज को फॉलो करें और अधिक लाइव क्रिकेट मैच दिखाने के लिए इसे लाइव दोस्तों के साथ शेयर करें। प्लीज इस पेज को फॉलो करें और अधिक लाइव क्रिकेट मैच दिखाने के लिए इसे लाइव दोस्तों के साथ शेयर करें। प्लीज इस पेज को फॉलो करें और अधिक लाइव क्रिकेट मैच दिखाने के लिए इसे लाइव दोस्तों के साथ Fahim Ashraf is the new man at the crease. They have fallen very quickly from a position that looked like 180, 190 was possibility. Pakistan have fallen away dramatically. Excellent bowling spell, especially this over, picking up 2 wickets, and it's given nothing away. Fahim Ashraf is new batter. Last 4 overs, it's been terrible from Pakistan. They batted like a schoolboys. Another one. There we go. Tilak Verma is the man at mid-off. And what an over. 3rd wicket in this over. Pakistan losing it. Well, they cannot believe it. The bench, the fans, this man can, and he has the ability to do this. It's slow, it's looped up. Fahim thinks I'll have some of that, but it's straight to Tilak Verma. Down at long off. He is one of the best in the Indian side and holds on to it comfortably. Have crumbled from 113 for 1 to 134 for 8. प्लीज इस पेज को फॉलो करें और अधिक लाइव क्रिकेट मैच दिखाने के लिए इसे लाइव दोस्तों के साथ शेयर करें। प्लीज इस पेज को फॉलो करें और अधिक लाइव क्रिकेट मैच दिखाने के लिए इसे लाइव दोस्तों के साथ शेयर करें। प्लीज इस पेज को फॉलो करें और अधिक लाइव क्रिकेट मैच दिखाने के लिए इसे लाइव दोस्तों के साथ शेयर करें। प्लीज इस पेज को फॉलो करें। Haris Rauf. They've been coming and going very quickly of late, have the Pakistan batters. In danger now of not batting out their 20 overs. Bumrah is back. 2 overs for 18 early on. Oh, there's some indecision about taking the single as well. It's a state of mind. At this stage, Haris Rauf has just come in.
I'm speechless. Honestly, I have no clue what this middle order and late middle order trying to do. You just lost a wicket. You lost 2 wickets in an over. And Fahim Ashraf comes in and hit it straight to the man at mid-off. What a bowler. Not taking nothing away from him, but that's a terrible batting from Pakistan. balls, 7 for 28. Look away if you're a Pakistan cricket fan. Haris Rauf gets his innings underway with a cultured edge down the 3rd for 4. Boundary came after 16 deliveries. Although everyone tried to hit boundary, they were looking to hit in the crowd and kept on losing wickets. Little edgy, played it little late with the open blade. Good smart batting. Then Pakistan reached to 160. It's a big ask because the way they're losing wickets, I have no trust in them. We've seen signs of what Mohammad Nawaz can do with the bat. Haris Rauf has just got to stay with him. He does have some power, Haris Rauf. We've seen him hit some sixes in our time, but look at that. So they were 113 for 1 at one stage. Lost their 2nd wicket there. And then 8 for 134. That is some serious collapse. Should push for 2 here, and they will. Haris Rauf got to be smart here. He's still got Mohammad Nawaz on the other end, who can play a good knock here for Pakistan to put them in a decent position. I mean, they've done so well in the first 10-12 overs. They still can manage 160 after playing so poorly in the last 5 overs. But they got to be mindful here. Don't lose wicket. Just make sure you stay out there. Give Nawaz an opportunity, a chance to put Pakistan in a kind of decent total. No, it's not going to happen. Waqar nails the Yorker. Does Bumrah. And Pakistan lose their 9th. They're in rush, this Pakistan team. 7 off the over, and look what Bumrah did. He's master of bowling those Yorkers. His feet going more toward leg side, given room to the ball. Hit the off stump. He's a genuine wicket taker. If he has not taken the wicket in up front, he'll take it at the end. Another bites the dust. Pakistan losing their 9th wicket. Haris gone for 6. It's 141 for 9. Ibrah Ahmed is the last man at the crease for Pakistan, and that's all he had to do. Varun Chakravarti will have to bowl the next, and maybe Nawaz can find some boundaries. 141 for 9.
2 overs to go. One from Varun Chakravarti, one more. इस पेज को फॉलो करें और अधिक लाइव क्रिकेट मैच दिखाने के लिए इसे लाइव दोस्तों के साथ शेयर करें। प्लीज इस पेज को फॉलो करें और अधिक लाइव क्रिकेट Boundaries. Maybe pick up a one off the last. Don't think there's any need to run unless it's an absolute certainty for 2. And that should be 2. Yeah, that's sensible. You're right, Dooley. Don't let Abrar face any more deliveries. Make sure that Mohammad Nawaz should deny a single. If there is 2, yes, run for it. But search for a boundary now. That's the only hope, the chance Pakistan have to get to maybe 160. Again, wide of the crease and just angling the ball in just at the off stump. What a bowler. So good with the new ball, and even when you give him a responsibility at any stage, he delivers. No run there. No opportunity for 2, so Nawaz does not bother. Player in the spotlight so often, Varun Chakravarti. 2 for 27, 3 deliveries left in his spell. Akshar was brilliant. 4 overs, 2 for 26, and Kuldeep has picked up 4 for 30 off his 4. So the spinners have controlled things through the middle very well. Well, 4th ball, and he's taken the 1. Hasn't really tried to hit a boundary yet. Yeah, they're feeling the heat, they're feeling the pressure. He did stop for a second, but he saw Abrar just running in fast. He wants to take a charge. Plenty of talk. It's a little too late now, Mohammad Nawaz. He shouldn't have taken single. And he's trusting Abrar to get through the last 2 deliveries. Well, he wants 1 now. Abrar, now they can't decide whether to take 1 or not. But he does. It's a state of mind, isn't it? It's what happened in the last 6 overs. I guess the batter coming in can't believe it. 4 wickets for Kuldeep Yadav is in the spotlight player. No doubt. What a bowler. He got hammered up front in the first 2 overs and then came back so well, so strongly, picking up 4 for 30. Now those in the ring are in tight. They do not want Nawaz to pick up 1. He might pick up... Oh, now what are they doing here? Oh, there's all sorts of confusion. I don't think he realised it was over. 146 for 9. Yeah. I don't know what's going on there. Nawaz was saying no. इस पेज को फॉलो करें और अधिक लाइव क्रिकेट मैच दिखाने के लिए इसे लाइव दोस्तों के साथ शेयर करें। प्लीज इस पेज को फॉलो करें और अधिक लाइव क्रिकेट मैच दिखाने के लिए इसे लाइव दोस्तों के साथ शेयर करें। प्लीज इस पेज को फॉलो करें और अधिक लाइव क्रिकेट मैच दिखाने के लिए इसे लाइव दोस्तों के साथ शेयर करें। प्लीज This will be Nawaz to face all 6, you would think. Pakistan 14. Did he find 3 boundaries and get somewhere in that late 150s? You just never know. Bumrah
around the wicket. Last over of the innings. Hits it hard, straight out to deep mid wicket. And taken. Rinku Singh with the catch. Pakistan bowled out. Have gone from 113 for 1 to 146 all out in no time. Having been sent into bat first, India's spinners have controlled that middle order. Bumrah's come back and picked up a couple. But Pakistan, well, it's been their own demise. They have played some average shots, some poor cricket, and just fallen away at the back end. Over the years, I've seen quite a bit of T20 cricket. I've never seen anything like that. That's a horror performance from Pakistan. 33 for 9. Pakistan, they were going well. They started. प्लीज इस पेज को फॉलो करें और अधिक लाइव क्रिकेट मैच दिखाने के लिए इसे लाइव दोस्तों के साथ शेयर करें। प्लीज इस पेज को फॉलो करें और अधिक लाइव क्रिकेट मैच दिखाने के लिए इसे लाइव दोस्तों के साथ शेयर करें। प्लीज इस पेज को फॉलो करें और अधिक लाइव क्रिकेट मैच दिखाने के लिए इसे लाइव दोस्तों के साथ शेयर करें। प्लीज इस पेज को फॉलो After a brisk start from Pakistan, they were setting themselves up for a 180, 190 total. The spinners came through. Akshar came back. लगता था बहुत सतासी तो विकेट है आउट तो यार बस गोमरा अपनी मार की सारी खुश कर ऐसा कि मुंह पार में दे वो खड़ा भी नहीं थी उड़ना ऐसा जो कहीं के में छाती कहीं तक छाती ढाना ना मैं लाइव गया था YouTube गोमरा सारी बात कर दे गए छत्ता क्या सारी पाकिस्तानी वहां बैठी है मेरा वंजिलो ने मस्जिद नमाज पढ़े होने काका तो इंडिया ने गिले में आज नहीं नहीं आखिरी ओवर तक बाजी है वहां ये देखी ना 5 ओवर तो with his 57 and Fakhar Zaman with 46 off 35 who played well. Apart from that 14 from Saeem Ayub, the rest is a telephone number. Four for 30 off 4 overs for Kuldeep from Bumrah on that occasion. The skipper just hit one straight up in the air. Sanju Samson taking the catch there. Shaheen Shah Afridi, well, he swiped at 4 deliveries. One of them was a wide. The other 3 ended up being dots. And then Fahim hit his second ball straight to Tilak Verma down at long off. Nothing for Shivam Dubey, but he did a good job opening up with the new ball. Bumrah with a couple, Varun Chakravarti with 2, Akshar Patel with 2, and Kuldeep with 4. But look at the bottom line. 84, 113, and then an absolute procession of wickets for Pakistan to be bundled out for 146 in 19.1 overs. The DP World Asia Cup final on the line. India won the toss, sent Pakistan into bat, and that is the task in front of this powerful Indian side. 147 runs needed to take the title from their 20 overs. प्लीज इस पेज को फॉलो करें और अधिक लाइव क्रिकेट मैच दिखाने के लिए इसे लाइव दोस्तों के साथ शेयर करें। प्लीज इस पेज को फॉलो करें और अधिक लाइव क्रिकेट मैच दिखाने के लिए इसे लाइव दोस्तों के साथ शेयर करें। प्लीज इस पेज को फॉलो करें और अधिक लाइव क्रिकेट मैच दिखाने के लिए इसे लाइव दोस्तों के साथ शेयर करें। प्लीज इस पेज को फॉलो करें और अधिक लाइव क्रिकेट मैच दिखाने के लिए इसे लाइव दोस्तों के साथ शेयर करें। प्लीज इस पेज को फॉलो करें और अधिक लाइव क्रिकेट मैच दिखाने के लिए इसे लाइव दोस्तों के साथ शेयर करें। प्लीज इस पेज को फॉलो करें और अधिक लाइव क्रिकेट मैच दिखाने के लिए इसे लाइव दोस्तों के साथ शेयर करें। प्लीज इस पेज को फॉलो करें और अधिक लाइव क्रिकेट मैच दिखाने के लिए इसे लाइव
तो की लगे आवे बहुत अल्लाह मोया मैं चिकन खा लागी नो एक ही लग गई हाँ ये क्या लग गई दसो भाई बंदे पे यार बल नहीं जो बनी जो आपने साइड पे हाँ वंडी गई अदा ना आवे बंडो बंडो भाई हाँ बंडो ये जीत गया पाकिस्तान वाल तो पी ले ठीक या इंडिया जीत गया वाले पे कौन पी ले जी ए भी ले क्या कितना ले ले खाना ला ए वो गाना तेरा सादा खाना पी ले तू साना ला मैं गोपड़े तो बाहर गई नहीं मैं आखिर ये मना वो शुद्ध उल्टा थी मेरे वाल सेट से कुछ चुना था नीति टाइम नीति बेटा वाली तो नहीं लेना यार वो क्या करा ली तेरे को पता म्यूट गाड़ी तेरे को पता है ली फील्डिंग खड़ी थी नहीं बढ़िया ली सारे पाकिस्तान की टीम सही करे जी वाल फील्डिंग सही करे जी तेल मर गए सी हां तेल मरा दे कि नहीं यार कहना मंदे कड़े थी कैप्टन ऐसी गोल नहीं था थली गाल क्या नहीं करनी वो शुद्ध आगे खिलाड़ी जी हैं सारे गैन पे वाल आ तू आ आए आए तेरे गोल हाँ चलो भाई यार घूम रहा खला खाना कर यार कहां इंडिया है हमरा अपनी पानी करते को लगा हाँ खेल तो ये आलू खाओगे जल्दी से खा लो उतले को यार इंडिया ने بهم سلامونه دوستانو هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ او د سیاحت جامې پر تن ولرئ څنګه چې تاسو ولیدل ډېره خوندوره لوبه ترسره شوه د هند او پاکستان ترمنځ انډیا لوبډلې ټاس وګټه او لومړی د توپ اچونې پرېکړه وکړله چې پاکستان لوبډلې لومړی توپ وهنه ترسره کړله او په 100 اورونو کې 146 हिला सलापो सी अच्छा منډې ترسره کړې کسان لومړیو کې ډېر ښه روانو خو په وروستیو کې هغسې لوبه ونه کړله وبه ګورو چې دغه هدف بیا هم دیا وکړئ دغه صفحه در سره فالو کړئ کرکټرو په نامه له ټولو دوستانو بیا هم نړۍ مننه کوو چې ځانو سره یو ځای لیدلی دی په دغه لایف کې نو تقریبا 3 لکه صفحه د ځان سره فالو کړئ بیا هم یوازې 9 دقیقې بعد به لوبه شروع کیږي هیله ده چې تاسو ټول دوستان زموږ ملتیا وکړئ او لوبه راسره تر پایه پورې په ژوندۍ بڼه وګورئ کوم دوستان څه پوښتنې لري پښتوني لړۍ راणे सब मार गया समझ नहीं आया ये वाला देख अवामी होले होले नहीं पिए इंडिया ये गंदी नहीं पिए पाकिस्तान में वो दिन में जलील करे थे टाइम ना समझ क्या गिने तेरे सही मैच देखा पाकिस्तानी है छक्का चौका खा गया बढ़िया बोले जा ये छक्का नहीं फ्लक्स नहीं न्यूजीलैंड अरे गए मेरी भी होले डाले दिखती नहीं मैं क्या करें तू ही दादी क्यों मेरे आप बनिए ना न्यूजीलैंड माल दी जल्दी करी सब आम गुड़े दे बैठे नहीं भी चले बंदे गए मोक बेटा चैनल वो क्या है ना मां क्यों तरी आगे की करो आगे कॉल खाने दे बल दे होना करी तो भी खराब हो बेटा
ठीक है खराब ला नहीं लगता फेसबुक की सेटिंग इन वन बाबा बत्ती थी मैं चल थी ना बहनों में आज सेटिंग ही वन मैं चल गए एक घंटे लेकिन कितनी घंटे 3 घंटे आ सके खानी हाल फील्डिंग कर दी फील्डिंग आ गई बाबा हाल ये सर 5 है और आसन नहीं क्या अरे प्रैक्टिकल तो की अप्लाई कर बंद कर तू बदल गए बात ठीक है और फील्डिंग आने वाले चला 58 Farhan of 45 विकेट उड़े जुमेर के लिए असम मरे सुता असम घुमारी थी छक्का मारे दूंगी ताड़ी छक्का विकेट हुई है की दो आगे एक जार कर मारे जे कैच छोड़ता है बस मैं निकलता हूं ये हम लोग छक्का कहां पे बर्बाद थी असा छक्के ते खुश है असा के छक्का लग गया दा मुकाला मार जाने को तू शीशा ते में खड़ा यूं मार दे चाहिए कैमरा साड़ी लगता ही नहीं होना जो कैमरा उड़ाया वो ड्रोन ड्रोन तो बता दिया वो ड्रोन नहीं बनी गया नहीं चल रहा है मैच देख ओड़े ये और से गर्मी लगी बेटी पक्का चलेना बेटे क्या करेंगे अवाम ओड़े ठीक भन्नी में दियो देख नो में बोल दी नो में रिप्लाई बांधते वाल ने केड़ी फिल्म के बाद एशो कपूर इंडिया पाकिस्तान जी बांध के वाल 2 मिनट वेट भाई गिव वाल एशिया का ब्रॉडकास्ट स्टार्ट्स एंड 2 मिनट्स नो मी डिजाइन असली ये डिजाइन गिफ्ट हां मैं मैंने जाना पे क्या जाने ये डिजाइन टू फिचाऊं आ जाओ ये कोई गाल ना कर मरे नहीं बिन वाल बंदा अपने गाय बैठे ना वाल चाप कोई ना मैच खत्म ले हरे ने बम मार रहे हैं नहीं पर सारी टीम भी रोले तो वो भी रोले नहीं आखिरी है कवर रांदा पियो तो स्कोर थोड़ा दिया रांदा हो बाकी बम मारिया ये तो आगे बैट ड्रॉ हो गया ये आकर चले दो वाल दी ये बारिश आवने करे बारिश आवने नहीं दो मिलना मैं स्टार्टिंग नॉन स्टार्टिंग आधा एक घंटा भी अब और फिर भर दे बड़े है कमाई दे घंटे रे तू ही सच्चा है ये सच्चा है बंदा 1 मिनट है क्योंकि 1 मिनट आते बच्चे आगे थे 1 मिनट तक चलता रहा नहीं जब खेल मरे पैनल तो पवे नहीं है ना मैं बल
लास्ट है 15 का नवा कितना लाइक भड़काओ क्या ये 12 और नेड़ लग गए चुप कर दे पंचे करे यार दोस्त ने वहां के रोटी खवा रहे हो यही डावरा तू बात उन्हें दे डाव बात पते ने पहले ये ना स्कूल जो पूरे रोटी भाई ये बड़ा के मैं क्यों अल्लाह तेरी इन्हें दे काम में चलो टांग मुक इक्का विकेट उन्होंने चावे जे खा रही है बड़े बार और फिर से वो भी कर दो मेरे दिन बाद चलो 15 लाख दिले वावे में गुस्सा है कौन पूतल ना छुट्टी हां रख यार हुन तक रख तू दिले वावे में गुस्सा ना इधर साहब में को मर साहब में मार पहले उन्हें खानदान ना काटो यार भाई जो बहुत ही बंद किया कितना लगा रहे हैं You are ready. Start now. वेलकम And it is victory for India. And it's been a terrific. These performances here stand out. Congratulations to Sri Lanka. Thoroughly deserved champions. We're at the halfway mark of the final, the DP World Asia Cup 2025. And of course, right now, it's a final that's been dominated by India. We're in Dubai, obviously. Pakistan had a really promising start, but unfortunately they just collapsed when they were batting. And in the end, that is the target that India need. 147 from 20 overs. It really has been wonderful to watch him strike and play so well. In the last innings, by the way, he scored 50 boundaries. That's what he notched up in his last 13 knocks. 674 at an average of 52 at a strike rate of 210, which is quite extraordinary. It really is amazing. So they're going to have to get rid of him for starters. Sunny Gavaskar? Yes, quite extraordinary is the correct word to describe what Abhishek Sharma has been doing in recent times. He and Jeff, very, very good partnership in this tournament, getting India off to good, brisk starts. Shubman Gill hasn't quite fired, but he's scored runs, but hasn't got the big runs that we've come to expect from his bat. There's the 280 batsman, Gill and Abhishek. They're the two men that are going to be taking guard against Shaheen Shah Afridi right at the top. It'll be interesting to see what the first ball is going to be this time around from Shaheen Shah Afridi. 197.66 the strike rate. Oh, mind-blowing. Yeah, it's astonishing, really is. He's got someone at the other end who hasn't got too many runs so far, but he's a wonderful player, we know that. 142 is his strike rate. And cricketer too, Shubman Gill, of course the Red Bull captain, but he's the man that's going to have to try and set a serious tone. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Right, so here we go. That's what Pakistan need. Right start with all hand. I would imagine that Abhishek is thinking, okay, that looks good enough for me as well. Those two. That's how he's played so far. He's been wonderful to watch. But this is a nice little head-to-head. Afridi versus Abhishek. Missing, advancing, going down the track, looks to go back over his head, first ball. Yes, I think sometimes, a batter says this is the only way that I'm going to play. That I've hit him for twice before first ball for a 6. I'm going to go down. But look, it is exactly the kind of situation that Bangladesh was against Pakistan. They had to score 100, was placed sensibly. And I think what India need to do without
sort of losing their aggressive touch. They have to play sensibly aggressive. There's a bit of swing. It's pretty hard. And that's gone for 4 straight away. Exquisite. But there you are. No risk taken, but playing really well. He's got this great gift because look at that high backlift. Almost like a Lara kind of backlift, high backlift. So when it comes down, have to hit it too hard. Just the momentum of the bat coming down from so high that propels the ball to the boundary. His grip is pretty high on the bat handle as well. Really is a terrific striker. Oh, that's a very good delivery. That's beautifully bowled by Afridi. Pace too. Yes, very good. Now this is where Abhishek Sharma has to just work out. Because look, he's gone from thumbs to attack so early. See where he's gone. See where he's gone. Open the door. You do not need to do anything different. He loves getting wickets in the first over. Afridi, we know that. Inside edge, onto the foot. Couple of fine last deliveries, comeback deliveries from Afridi. 145 k's per hour that last delivery. He's running in well. Shaheen Shah Afridi. All his deliveries have been over 141, excepting the second one, which was about 139. And this last one was 145. India don't have to finish the match in 16 overs. So they just have to win this game. Charging in Afridi. A little bit leg side, that's picked up. Should be just the one, it is. We'll bring Gill down to the business end now. You're going to have to get a couple of quick wickets right at the top. Oh, Pakistan, I would suggest in that power play they need at least 3. At least 3. Yes, I think that first power play they get wickets to put India on. Exactly like what they did to Bangladesh a couple of days back. Bangladesh weren't chasing too big a total. India not chasing too big a total. The required rate at the moment is a little over 7.4. Last ball, the first over. That's away. Gill's off the mark. Coming back for the second. 7 for 9 off the first. Quick look at the Pakistan batting card. They were 87 for 1 at 10 overs today. They were 91 for 1 at 10 overs when they played them last. And they lost their last 9 wickets for 33 runs in 39 deliveries. It was a capitulation of note. Only 2 guys got runs. Farhan got 57 off 38. Waqar Zaman got 46 off 35. Both of them hit a 6 and then got out the very next ball, both of them. Right, Fahim Ashraf now. Now he's had to drag that, a bit of a slower delivery. Out, wicket, first up. Fahim Ashraf has struck. That's all they wanted. They've got Abhishek eventually. That is विकेट बोला था ना इस ओवर में एक और विकेट आएगा आ गया ना मेरे भाई विकेट भाई 20 ओवर में कितना रन बनेगा देख लो टेलीग्राम लिंक कमेंट बॉक्स में डला हुआ है बता दिया गया है 20 ओवर में कितना रन बनेगा और मैच विनर कौन होगा ये बता दिया गया है टेलीग्राम लिंक कमेंट बॉक्स में डला हुआ ज्वाइन करो मेरे भाई फास्ट ज्वाइन करो विकेट बोला था ना इस ओवर में एक और विकेट आएगा आ गया ना मेरे भाई विकेट
भाई 20 ओवर में कितना रन बनेगा देख लो, टेलीग्राम लिंक कमेंट बॉक्स में डला हुआ है, बता दिया गया है 20 ओवर में कितना रन बनेगा और मैच विनर कौन होगा ये बता दिया गया है। टेलीग्राम लिंक कमेंट बॉक्स में डला हुआ है, ज्वाइन करो मेरे भाई, फास्ट ज्वाइन करो। विकेट बोला था ना, इस ओवर में एक और विकेट आएगा, आ गया ना मेरे भाई विकेट। भाई 20 ओवर में कितना रन बनेगा देख लो, टेलीग्राम लिंक कमेंट बॉक्स में डला हुआ है, बता दिया गया है 20 ओवर में कितना रन बनेगा और मैच विनर कौन होगा ये बता दिया गया है। टेलीग्राम लिंक कमेंट बॉक्स में डला हुआ है, ज्वाइन करो मेरे भाई, फास्ट ज्वाइन। उड़ा दिया ना मेरे भाई, उड़ा दिया ना, मैंने बोला था डबल जैकपॉट चेंज होगा। फाइनल मैच विनर देखना अभी भी तो नीचे लिंक है, लिंक पे क्लिक करके मेरे भाई चैनल ज्वाइन कर लो, जल्दी से जाओ लिंक पे क्लिक करो और चैनल ज्वाइन कर लो। इंडिया वर्सेज पाकिस्तान में बुक्कियों की गांड फाड़ देंगे, फाइनल कौन जीतेगा, किस स्टाइल में जैकपॉट उड़ेगा, पाकिस्तान उड़ाएगा इंडिया। फुल स्क्रिप्टेड अपडेट डाल दिए मेरे भाई, 20 ओवर में कितना रन बनेगा फुल स्क्रिप्टेड अपडेट है, नीचे लिंक पे क्लिक करो और ज्वाइन कर लो मेरे भाई, जल्दी जाओ ज्वाइन कर लो, लास्ट चांस है, लास्ट मौका है मेरे भाई, जल्दी जाओ ज्वाइन करो। उड़ा दिया ना मेरे भाई, उड़ा दिया ना, मैंने बोला था डबल जैकपॉट चेंज होगा। फाइनल मैच विनर देखना अभी भी तो नीचे लिंक है, लिंक पे क्लिक करके मेरे भाई चैनल ज्वाइन कर लो, जल्दी से जाओ लिंक पे क्लिक करो और चैनल ज्वाइन कर लो। इंडिया वर्सेज पाकिस्तान में बुक्कियों की गांड फाड़ देंगे। Back to his stop pace. Yes. Ashraf is a medium pacer. He'll bowl around 135, 140 mark. He's got a fabulous strike rate as well, 164.6. 21 50s and 400s. That is a terrific record. I mean, he's an average of 12, strike rate of 110, high score of 47. Not in his greatest nick right now. We'll just need a couple though to hit the middle of the bat and they'll be away, but they've got to make sure Pakistan, they keep him honest. Yes, absolutely. India are not chasing 190 plus, they're chasing only 147. It's a slow delivery first up. They had to reach for it. Already decided that the first ball is going to go the aerial route. Fahim Ashraf bowls it wide, bowls it slow and gets his man. Had a string of 30 plus scores, 7 of them actually, Abhishek. Had he done that, it would have been the first strike now. Shopping that one in the cover region, no run there. Normally when you have the power play of 6 overs, you're looking to take advantage of the 2 fielders outside the 30-meter circle. But here, your asking rate is reasonable. It's not something in the region of 9 or 10 runs and over. So you don't really need to take any risks. All you need to do is get off to a solid start. Even 35 for 1 would be a great start. Slow ball again from Fahim. Which gives us pace nicely. Nicely disguised. Very little change in his delivery action. It's only the last moment he pulls the speed back. So wicket first ball of this over, the big wicket of Abhishek, and there's only been 1 run since then. It's been good bowling from Fahim, that slow ball first up. Abhishek, I think, was expecting pace on, in the end had to reach for it, just scooped it to Haris Rauf. Eased away on the onside. Coming back for the second. 10 for 1.
It's not a massive total that's being chased today by India. I'm sure that after the start with the bat, the first 10 overs, Pakistan would have been looking at certainly the 190 mark. Would have thought, okay, we've got to make sure we don't make the same mistake that they made last time they played against India. It was worse. Losing all those wickets. 9 of them for just 33 runs. Anyway, Afridi now to try and make amends with the ball. Up against the skipper. And the man who picked up most of the wickets today was Kuldeep Yadav. He was absolutely outstanding. He got a little bit of tap in his first couple of overs, actually. Yes, but after that, when he got this wicket, he was back to his best. Boxing the batters with his wrong ones and the normal leg spinner. 4 wickets he takes. 4 wickets. And he brought India back in the game. Kuldeep did. Yeah, brilliant. 3 in his last over. Superb stuff. 17 overall. Top of the pots and the wickets by some distance, actually. Kuldeep was terrific when he got his teeth into the game. Striving for the big Yorker. Good delivery that. Very good. Fast, straight Yorker. Getting the ball to curve into the right-handed Suryakumar Yadav. 17 wickets in the Asia Cup over here. Junaid Siddiqui, UAE's second best, along with Shaheen Shah Afridi and Mustafizur, as well as Haris Rauf. Haris Rauf and Shaheen Shah Afridi have a chance to go to the second place. Well, Pakistan played him really well initially, but then once he got into the game, once he started to turn up both ways considerably, they were nowhere really. Afridi again. In the air. Out. Out. Now it's out. Couple of juggles. Captain's taken that. उड़ा दिया ना मेरे भाई, उड़ा दिया ना। मैंने बोला था डबल जैकपॉट चेंज होगा। फाइनल मैच विनर देखना अभी भी तो नीचे लिंक है, लिंक पे क्लिक करके मेरे भाई चैनल ज्वाइन कर लो। जल्दी से जाओ, लिंक पे क्लिक करो और चैनल ज्वाइन कर लो। इंडिया वर्सेज पाकिस्तान में बुक की होगी, गार्ड मार देंगे। फाइनल कौन जीतेगा, किस स्टाइल में जैकपॉट उड़ेगा, पाकिस्तान उड़ाएगा इंडिया। फुल स्क्रिप्टेड अपडेट डाल दिए मेरे भाई, 20 ओवर में कितना रन बनेगा। फुल स्क्रिप्टेड अपडेट है, नीचे लिंक पे क्लिक करो और ज्वाइन कर लो मेरे भाई। जल्दी जाओ, ज्वाइन कर लो। लास्ट चांस है, लास्ट मौका है मेरे भाई, जल्दी जाओ, ज्वाइन करो। उड़ा दिया ना मेरे भाई, उड़ा दिया ना। मैंने बोला था डबल जैकपॉट चेंज होगा। फाइनल मैच विनर देखना अभी भी तो नीचे लिंक है, लिंक पे क्लिक करके मेरे भाई चैनल ज्वाइन कर लो। जल्दी से जाओ, लिंक पे क्लिक करो और चैनल ज्वाइन कर लो। इंडिया वर्सेज पाकिस्तान में बुक की होगी, गार्ड मार देंगे। फाइनल कौन जीतेगा, किस स्टाइल में जैकपॉट उड़ेगा, पाकिस्तान उड़ाएगा इंडिया। फुल स्क्रिप्टेड अपडेट डाल दिए मेरे भाई, 20 ओवर में कितना रन बनेगा। फुल स्क्रिप्टेड अपडेट है, नीचे लिंक पे क्लिक करो और ज्वाइन कर लो मेरे भाई। जल्दी जाओ, ज्वाइन कर लो। लास्ट चांस है, लास्ट मौका है मेरे भाई, जल्दी जाओ, ज्वाइन करो। उड़ा दिया ना मेरे भाई, उड़ा दिया ना। मैंने बोला था डबल जैकपॉट चेंज होगा। फाइनल मैच विनर देखना अभी भी तो नीचे लिंक है, लिंक पे क्लिक करके मेरे भाई चैनल ज्वाइन कर लो। जल्दी से जाओ, लिंक पे क्लिक करो और चैनल ज्वाइन कर लो। इंडिया वर्सेज पाकिस्तान में बुक की होगी, गार्ड मार देंगे। फाइनल कौन जीतेगा, किस स्टाइल में जैकपॉट उड़ेगा, पाकिस्तान उड़ाएगा इंडिया। फुल स्क्रिप्टेड अपडेट डाल दिए मेरे भाई, 20 ओवर में कितना रन बनेगा। फुल स्क्रिप्टेड अपडेट है, नीचे लिंक पे क्लिक करो। विकेट बोला था ना, इस ओवर में एक और विकेट आएगा, आ गया ना मेरे भाई विकेट। भाई 20 ओवर में कितना रन बनेगा देख लो, टेलीग्राम लिंक कमेंट बॉक्स में डला हुआ है, बता दिया गया है 20 ओवर में कितना रन बनेगा और मैच विनर कौन होगा ये बता दिया गया है। टेलीग्राम लिंक कमेंट बॉक्स में डला हुआ है, ज्वाइन करो मेरे भाई, फास्ट ज्वाइन करो। विकेट बोला था ना, इस ओवर में एक और विकेट आएगा, आ गया ना मेरे भाई विकेट। भाई 20 ओवर में कितना रन बनेगा देख लो, टेलीग्राम लिंक कमेंट बॉक्स में डला हुआ है, बता दिया गया है 20 ओवर में कितना रन बनेगा और मैच विनर कौन होगा ये बता दिया गया है। टेलीग्राम लिंक कमेंट बॉक्स में डला हुआ है, ज्वाइन करो मेरे भाई, फास्ट ज्वाइन करो। विकेट बोला था ना, इस ओवर में एक और विकेट आएगा, आ गया ना मेरे भाई विकेट। भाई 20 ओवर में कितना रन बनेगा देख लो, टेलीग्राम लिंक कमेंट बॉक्स में डला हुआ है, बता दिया गया है 20 ओवर में कितना रन बनेगा और मैच विनर कौन होगा ये बता दिया गया है। टेलीग्राम लिंक कमेंट बॉक्स में डला हुआ है, ज्वाइन करो मेरे भाई, फास्ट ज्वाइन करो। विकेट बोला था ना, इस ओवर में एक और विकेट आएगा, आ गया ना मेरे भाई विकेट। भाई 20 ओवर में कितना रन बनेगा देख लो, टेलीग्राम लिंक कमेंट बॉक्स में डला हुआ है, बता दिया गया है 20 ओवर में कितना रन बनेगा और मैच विनर कौन होगा ये बता दिया गया है। टेलीग्राम लिंक कमेंट बॉक्स में डला हुआ है, ज्वाइन करो मेरे भाई, फास्ट ज्वाइन करो। विकेट बोला था ना, इस ओवर में एक और विकेट आएगा, आ गया ना मेरे भाई विकेट।
भाई 20 ओवर में कितना रन बनेगा देख लो, टेलीग्राम लिंक कमेंट बॉक्स में डला हुआ है, बता दिया गया है 20 ओवर में कितना रन बनेगा और मैच विनर कौन होगा ये बता दिया गया है। टेलीग्राम लिंक कमेंट बॉक्स में डला हुआ है, ज्वाइन करो मेरे भाई, फास्ट ज्वाइन करो। विकेट बोला था ना 20 ओवर में कौन विकेट आएगा, आ गया ना मेरे भाई विकेट। भाई 20 ओवर में कितना रन बनेगा देख लो, टेलीग्राम लिंक कमेंट बॉक्स में डला हुआ है, बता दिया गया है 20 ओवर में कितना रन बनेगा और मैच विनर कौन होगा ये बता दिया गया है। टेलीग्राम लिंक कमेंट बॉक्स में डला हुआ है, ज्वाइन करो मेरे भाई, फास्ट ज्वाइन करो। विकेट बोला था ना 20 ओवर में कौन विकेट आएगा, आ गया ना मेरे भाई भाई 20 ओवर में कितना रन बनेगा देख लो, टेलीग्राम लिंक कमेंट बॉक्स में डला हुआ है, बता दिया गया है 20 ओवर में कितना रन बनेगा और मैच विनर कौन होगा ये बता दिया गया है। टेलीग्राम लिंक कमेंट बॉक्स में डला हुआ है, ज्वाइन करो मेरे भाई, फास्ट ज्वाइन करो। विकेट बोला था ना 20 ओवर में कौन विकेट आएगा, आ गया ना मेरे भाई 20 ओवर में कितना रन बनेगा देख लो, टेलीग्राम लिंक कमेंट बॉक्स में डला हुआ है, बता दिया गया है 20 ओवर में कितना रन बनेगा और मैच विनर कौन होगा ये बता दिया गया है। टेलीग्राम लिंक कमेंट बॉक्स में डला हुआ है, ज्वाइन करो मेरे भाई, फास्ट ज्वाइन करो। विकेट बोला था ना 20 ओवर में कौन विकेट आएगा, आ गया ना मेरे भाई। Now you can be there for your family. Anywhere in the world, in case of a health emergency, Policy Bazaar guarantees complete support from the time of hospitalization to claim. Buy 1 crore health insurance starting at just 2,000 rupees. Policy Bazaar guarantees complete support from the time of hospitalization to claim. Buy 1 crore health insurance starting at just 2,000 rupees a month only on policybazaar.com. Brew, fuel your power play. One thing you don't want to do is give Shaheen Shah Afridi an opportunity to get his tail up. He's picked up the huge wicket of the opposition captain now. Tilak Varma's arrived at number 4. They're not in form, like Suryakumar Yadav hasn't been in the best of form apart from that first game against Pakistan where he smashed 47. So all the more reason to try and play it along the ground rather than go the aerial route. Because your timing will not be there, because your form is not good. Slip in position, second slip. Nicely bowled from Afridi. Look at the numbers of Tilak Varma playing in his 30th, 31st innings, 30 up until now. Average of 50, it's terrific stuff. Strike rate of 150 is outstanding as well. High score of 129 out against South Africa. Remember that one. Top knock. Scrambling one and he's off the mark. Have a look at this shot. Have a look at this shot. Foot has gone nowhere near. And he knows as soon as he's hit it that he's going to be in trouble. That's a fine catch. The top class catch that. The skipper himself, Salman, taking a superb catch. Getting his fingers under the ball. Another slower ball is 2 wickets, the 2 slower deliveries. One from Ashraf, one from Afridi. 1 run from this over up until now, and a wicket. We're 1 ball shy of 3 overs, 11 for 2. A couple of... We're 1 ball shy of 3 overs, 11 for 2. A couple of issues with the lights. I guess it's no more than about 10 metres of lights, maybe 12 metres of lights that have just gone off. They're the only ones that I can see that are not working at the moment. There you go. That's the spot.
I think those lights have gone off, so clearly the batters don't want to carry on. They want the best of lights as well. And have another look at the wicket of मुकौन पाएंगे उन्हें लेटर को भाई जब बट्टे मारन पाएंगे अन्नो इन्हें बंगले नहीं बैठे तार कटेंगे good catch diving forward, got those fingers underneath it. That's what's a little bit of a juggle as well, and a roll. At one stage he wasn't too sure where that ball was, but ended up on his stomach actually, and that's why he came up and big smile on his face. I think someone might have trodden on his foot at the same time in his celebration. So I think they're looking for it on his foot at the same time in his celebration. So I think they're looking for the lights to get ready. Shubman Gill. Now he's the vice captain of the team. The captain's gone. He's got to now play a vice captain's innings to take India home. Never mind if you start slowly. Don't play a risky shot. That's been pretty good thinking so far from Pakistan. Obviously some thought put behind this outing up until this stage. Expecting Abhishek to get after the bowling hard. Slow ball to get rid of him. Also to Kumar Yadav. Maybe the crowd's trying to help. Got the torchlights and the cell phones out. I think they'll do that. That is the feature of the T20 where the DJs speak in between deliveries, not in between overs. I wonder what the umpires are going to do while we try and get this sorted out. Spotted straight away by Shubman Gill. He realised that the lights had just dipped diffraction. Let's just look back and have a look at Pakistan's batting card. And Farhan played really nicely, 57 off 38. He was absolutely livid with himself when he got action. Let's just look back and have a look at Pakistan's batting card. And Farhan played really nicely, 57 off 38. He was absolutely livid with himself when he got out. 5 4s and 3 6s in that knock. Superb innings, absolutely terrific innings. Hitting was so clean and powerful. Got stuck into Jasprit Bumrah as well. Picked the slow delivery up quite nicely, moving away and punishing the ball. Then superb innings, absolutely terrific innings. Hitting was so clean and powerful. Got stuck into Jasprit Bumrah as well. Picked the slow delivery up quite nicely, moving away and punishing the ball, then playing the slog sweep. Then the pull shot, played everything. And then, of course, clearing the front foot and hitting a huge 6 to get to a half century. Was upset when he got out. And we know now why, because with that wicket, the doors were open for the Indian spinners to come and strike. And that's exactly what they did. Kuldeep Yadav took 4 wickets, Akshar Patel took 2 wickets, Varun Chakravarti took 2 wickets. So 8 wickets taken by the Indian spinners. Choking up the batting, good catch, low down. Then again in the same over, looking to go for the big E, not picking the googly. Then moving across and being out LBW, and in the same over, last ball off for that over. Go for the big E, not picking the googly. Then moving across and being out LBW, and in the same over, last ball off for that over. Getting it straight down, long off's throat. So those 4 wickets certainly pushed Pakistan back from what otherwise looked like a 180 plus score. Yeah, look at the match summary, 146, that's all, with Pakistan losing those last 9 wickets, just 33 runs, which really puts them in no man's land to a certain extent at the halfway mark, but 11 for 2 now, India. Right, here we go again. Afridi charging in. Very good delivery from Afridi. Trying to stop the one, run out. Oh, that would have been interesting.
From Murray actually charging in. Very good delivery from Afridi. Trying to stop the one, run out. Oh, that would have been interesting. From the reaction of the Pakistan players had a... Anything to get your Google rates. A sport to India. So, will you help? What help? $5,000 to Naveen Bhaiya in Noida. Naveen Bhaiya, Noida! Kochi! Andheri! Yes! We do anything to get your Google rates. A sport. Indian captain looking reasonably relaxed there. Disappointed, obviously, I'm sure that he has missed out again in this innings. Of action actually in that last ball, the last over. We'll show you shortly what happened with that. Fahim Ashraf starting his second over. Oh, it's a bit wide. He's reached it in the end. They're going to come back for the second. No, this time they stay with just the one. Want to take it back now to the last ball of the last over. I'm actually baffled by this Indian rush. I've just not understood what the unholy rush is. Look where he is. There's no chance. He would have been run out by miles. By miles. There was, I mean, what is going on? Why are they panicking? Chance. He would have been run out by miles. By miles. There was, I mean, what is going on? Why are they panicking? Why are they playing the kind of cricket that they are doing? Marcus Aman was the man that was charging in. There would have been 3 for 12. Back, no, 3 for 11. So there would have been. That would have been interesting. So that's someone like Gill out. Here's number 39, couldn't find the timber with that throw. Oh, this is good cricket. They've taken two. Once more, he's gone over the top. No, he's out. Good catch from Harris Ralph. He's got his second now. That is another big wicket. Pakistan will be delighted with the start they've had here, and the spectators are right behind them. They are throwing it away. India are just throwing this match away. That is all one can say. You've just hit a boundary. You've got 8 runs from the over, and yet to go out and play this kind of a shot. India are throwing this match away. 20 for 3. Gill gone for 12. 4 overs bowled. Slow. That is all one can. So 20 for 3. 4 overs have been bowled. Now then, 3 wickets down, 20 runs on the board. Game on for Pakistan. And Shaz has rightly said at your pitch report that this pitch is going to get slow. And a lot of variations from Fahim Ashraf got 2 wickets, Shaheen got a wicket in a slow ball. There's definitely game on, and if you bowl stump to stump, back of a length, the most impressive thing about Shaheen today is the way he adjusted his length. He's pulled it back because the batsmen won't have the pace they had in the earlier games. So this is a terrific power play so far for Pakistan. It's not allowed India to get away. More importantly, for them to come back after that batting performance was to take wickets, which they have. And got 3 wickets already, and that 2 of main players. So yeah,
This is brilliant bowling from Shaheen. He's bowling his third. Now there's example of that. When I said pace, you can see that ball not quite coming on. And that was at 140 clicks. And this is the last man to be dismissed. Yes, not getting hold of it, not getting the elevation, but a really good catch this. Timed the jump to perfection. And takes it with two hands. Just what the doctor ordered as far as Pakistan is concerned. 3 in power play. They've taken that at the start. Down leg side. Shaheen's jazzed up all right against India in this Asia Cup. I'll come back to it, but so far in this 4.3 overs, the paces, the variation, the slow balls, you can see tonight they bowl about at least 6, 7 or 8 slow balls, and that's what variation we talk about. And then of course the wicket ball of the main man. Oh, what a catch by Raufat Midon. They're coming back to Shaheen. Like I said, he's pumped up, jazzed up in this Asia Cup against India. 140 plus 5 deliveries against India, 34% versus other 12%. Big match player. Now round the wicket. Right on the money. You can see the pressure building. There's no Hardik Pandya today, so the middle order will be tested. Not had a great tournament as yet, the middle order. And then let's not forget, this is the final. So the pressure will be double. And of course, Rinku is playing instead of Hardik Pandya, and he hasn't had a game in this Asia Cup. He probably had some rest, but on the middle, on this particular pitch, kind of 2 pace now. 26 wickets in first to 6 over Shaheen Shafiri. And just to show the improvement he's made, first 4 matches is 8 overs, the economy rate was 9.3. Next 3 matches, the 8 overs, he's got 5 wickets, he's brought it down to 5.3, and that's because he's pulled the length back. You realize back of a length is the way to go on this particular track, on this pitch. I suppose in any pitch, especially against the likes of Abhishek Sharma, he bowled beautifully first over, just back of a length, slip there, backward point on the boundary. Sweet, very sweet from Sanju Samson. Just easing it into it. And a welcome boundary for India to end the over. 25 for 3. So 25 for 3. Tilak Verma, Sanju Samson in the crease, and India desperately need a partnership of sorts here. Just to stabilize things. The 6th over, last over of the power play. Only 25 runs has been scored. Required run rate over 8. Fahim is to continue. 2 for 11 in his 2. Bowled beautifully. Under pressure. He's been smart with changes of pace. He had a good over, and then he went, I think, for the Yorker. Maybe he was too full, and what a shot. It was right in his area. No problem whatsoever, with full face on the through X cover. Beautiful. And he wasn't very happy with himself, actually, Shaheen, after that delivery. Here we go, frustration. It was such a good over. Given the boundary on the last ball. This is good. Wicket to wicket. There's bowling within his limitations.
a sensible need of the hour. Just bowl within the stumps. If you're going to vary your pace, got to be within the stumps. And so far he has been exceptional. The chat going on between the senior player, Fakhar Zaman, the skipper, Salman Ali Agha. It may be change of field. Got two fielders outside the Sagar, obviously, into power play. Square leg in front of the leg umpire. Yeah, nicely timed. Ball racing away to the boundaries. He adjusted well there, just waited on it a little bit longer because of the pace of this pitch. It's such a good shot from Tilak Verma. It's not an easy shot to play on this kind of surface. It was a slow ball. He waited for it and played that beautifully in the gap between cover and mid-off. He was little wide, bit of width, and hence the boundary. It's a quality shot. Beautifully for six. What a shot that is, just on line. And Tilak Verma onto it in a flash. And now six. That's fast hands for you. Poor delivery. The fine leg was up, no pace, with a slow ball as well. But look at the line, asking for trouble. Easy pickings. Pressure off now in India. This partnership is building up. And Fahim have conceded 10 runs, 2 dot balls. Then 4, and then this massive 6, 72 meter towards the square leg. There's good awareness of the field as well. The fine leg was up, so he just waited on it so that he could get that angle and use the pace. This is the length, this is the line. If you're going to do variations, there's no point going down leg side. It's easier said than done from here, but you are defending a low total here. And there's no point giving unnecessary runs away. As a batsman, you've got to be a little careful on the surface now. Seeing the pace, the ball is also... क्रिकेट में हार के परेशान हो तो नीचे लिंक दिया है मेरे भाई बाबा ठाकुर के ओरिजिनल चैनल का लिंक है, जल्दी से जाओ ज्वाइन करो, चैनल को ज्वाइन कर लेना, जो आएगा मोटा पैसा कमा के जाएगा। एक बार लिंक को ज्वाइन करो, अगर काम पसंद नहीं आया तो तुरंत लेफ्ट कर देना मेरे भाई। क्रिकेट में हार के परेशान हो तो नीचे लिंक दिया है मेरे भाई बाबा ठाकुर के ओरिजिनल चैनल का लिंक है, जल्दी से जाओ ज्वाइन करो, चैनल को ज्वाइन कर लेना, जो आएगा मोटा पैसा कमा के जाएगा। एक बार लिंक को ज्वाइन करो, अगर काम पसंद नहीं आया तो तुरंत लेफ्ट। So after 6 overs, 36 for 3. So 111 needed of 84. Spin being introduced into the attack. And Nawaz will take the ball. Is it the right call? We'll find out soon. Got Ibrar as well from the other end. You got Haris Rauf as well. Depends who bowls the next over from the other end. But this will be a good matchup against Sanju Samson and Tilak Verma, who's very good against left-arm spinners. But sometimes your strength can be your weakness. As a bowler, you've got to believe that you can get that left-hander out. Yes, you saw what spin did when India bowled. But a very good power play for Pakistan. 36 for 3. Pakistan were 46 for no loss, and this is India's lowest in this tournament. Previous 6 games, they'd crossed 60. Swept and swept well. Splits the field. So this is the difference between the Pakistani middle order and Tilak Verma's shot. That was controlled. He knew what he was doing,
He didn't plan it before. The minute he saw the ball released, he realized it's the leg break. He's going to come into me, and he played beautifully between square leg and mid-wicket fielder for the boundary. You just can't go slog sweep against the mystery bowlers. It's literally next to impossible. Maybe 1 off 6, yes. Yes, and on a track like this, you've got to think of rotating the strike as well. It's not all about boundaries and sixes. Those ones and twos help you build it. And credit to Kuldeep Yadav. He went for 29 for 1 in his first 3 overs. And then he came back for 3 for 1 in his 4th over. Because of the shots is very important. Everybody's played against him. Last ball of the over for any bowler in this format is important. Yeah, that's to finish it off. Well, 5 is excellent. 5, 6 in your first over. That should do his confidence a world of good. So tidy over, just 6 of it, 7 gone, 42 for 3. Haris Rauf into the attack. क्रिकेट में RR के परेशान हो तो नीचे लिंक दिया है मेरे भाई बाबा ठाकुर के ओरिजिनल चैनल का लिंक है, जल्दी से जाओ ज्वाइन करो, चैनल को ज्वाइन कर लेना, जो आएगा मोटा पैसा कमा के जाएगा। विकेट कॉल है मेरे भाई, विकेट कॉल है, नीचे लिंक पे जाके चेक करो कितने ओवर में कौन सा विकेट जाएगा, कितने ओवर में कितना रन बनेगा। फिक्स अपडेट दे दी है, कौन सी टीम जीतेगी, टॉस कौन जीतता, मैच कौन जीतता, फुल स्क्रिप्टेड अपडेट। क्रिकेट में RR के परेशान हो तो नीचे बाबा ठाकुर के चैनल का लिंक है, जल्दी से He's got to target the stumps back of the length. I think that won't be easy to put away. And batter has to take a risk if you're bowling back over the length and just within the stumps and couple of variation, couple of deliveries. Don't be predictable as a fast bowler. He's quite experienced, no doubt. One of the most experienced bowlers in Pakistan T20 cricket team. That's good running. But the line good. Line and length is what the captain would expect. Yeah, good thinking, bowling around the wicket to the left-hander. That means he's going to tuck him in, try to come from outside off stump, finishing on off middle. Good pacey deliveries, the last one. 141. Oh, nicely put away. He's got fast hands. Sanju Samson generates a lot of back speed. Wasn't all that bad a delivery. Fine shot. It was not a bad delivery. It was just an exceptional shot from the special player. Let's have a look. It was just back of a length, just rocked back, just a back foot punch over mid-wicket fielder. Very good shot. That's terrific. He's back in his crease. Bottom hand coming into play to generate that back speed. Jazzy, I was hoping that Ebrar probably will bowl from that end. At least 1 or 2 overs, and Haris can come back from this end.
just settling things a little bit, this partnership. 29 from 22 after India lost 3 wickets quickly. So 20 for 3. But this partnership is building up nicely. They both are very dangerous players, match winners in their own right. And for Pakistan point of view, ideally they would have a wicket in next couple of overs. 7 runs from the over so far from Haris Saud. Very important delivery. Last ball of his over. Required run is just over 8. Electrifying atmosphere in at Dubai International Stadium. Pack house. And there's tension around the ground as well. It's that kind of a match. 7 of the over after 8, 49 for 3. What, this is going to be fun. We had Pakistan collapsing again at 146. A lot of fans watching and at the ground said, but India had been rocked back in the first 6 overs. Abhishek Sharma couldn't give them the flyer that he normally gives, and you can see there is a little bit of pressure now on every Indian batter. They're trying to stick to their principle of T20 batting, which is about going out there and playing freely. There have been 3 setbacks and big wickets, those, including the captain. So now that principle will have to do a little bit of alliance with today's reality. Abrar, for the first time. Tilak Verma has looked really good so far. Knocks off another single. That's the way to do it at the moment. You know, if it's not a boundary ball, then you can push it around for 1s or 2s. There will be the odd dot ball. That is what cricket is. Abrar is just coming to bowl, maybe what? Couple of delays. Is he getting turn? Is he getting bounce? Is the ball keeping low? As a time, there's a chance here. Dropped it. Reach with both. विकेट कॉल है मेरे भाई, विकेट कॉल है. नीचे लिंक पे जाके चेक करो कितने ओवर में कौन सा विकेट जाएगा, कितने ओवर में कितना रन बनेगा. उड़ा दिया ना मेरे भाई, उड़ा दिया ना. मैंने बोला था डबल जैकपॉट चेंज होगा. फाइनल मैच विनर देखना अभी भी, तो नीचे लिंक है, लिंक पे क्लिक करके मेरे भाई चैनल ज्वाइन कर लो. जल्दी से जाओ, लिंक पे क्लिक करो और चैनल ज्वाइन कर लो. इंडिया वर्सेज पाकिस्तान में बुक की होगी, गार्ड मार देंगे. फाइनल जीतेगा, इस स्टाइल में जैकपॉट उड़ेगा, पाकिस्तान उड़ाएगा इंडिया. अपडेट डाल दिए मेरे भाई, इस ओवर में कितना रन बनेगा. फुल स्क्रिप्टेड अपडेट है. नीचे लिंक पे क्लिक करो और ज्वाइन कर लो मेरे. जल्दी जाओ, ज्वाइन कर लो. लास्ट चांस है, लास्ट मौका है मेरे भाई. जल्दी जाओ, ज्वाइन करो. उड़ा दिया ना मेरे भाई, उड़ा दिया ना. मैंने बोला था डबल जैकपॉट चेंज होगा. फाइनल मैच विनर देखना अभी भी, तो नीचे लिंक है, लिंक पे क्लिक करके मेरे भाई चैनल ज्वाइन कर लो. जल्दी से जाओ, लिंक पे क्लिक करो और चैनल ज्वाइन कर लो. इंडिया वर्सेज पाकिस्तान में बुक की होगी, गार्ड मार देंगे. फाइनल कौन जीतेगा, किस स्टाइल में जैकपॉट उड़ेगा, पाकिस्तान उड़ाएगा इंडिया. फुल स्क्रिप्टेड अपडेट डाल दिए मेरे भाई. You can see even the fans who have assembled here on this ground. We've got a tremendous atmosphere today. They're applauding every single. That is what they as well want India to do. And I'll just give you a point of view of this Indian T20 team. It's a principle that they've embraced of T20 batting, no matter what the target, who the bowler. Especially in the first 6 overs with Abhishek Sharma, that's the way they're going to. And more often than not, it comes off and just makes it easier for the batters to follow. So that's their principle, which hasn't worked today. 54 for 3.
5 bowlers used so far. Just saw a drop catch from Pakistan. Incidentally, Pakistan has been the best catching team in this DP World Asia Cup. 88% has been the catching record. Just the one over for Haris Rauf. Got Saim Ayub. Seemed like keen to pick up the singles. But the big shot is sort of always there lurking as a very strong instinct for all these modern day batters. Yes, same Ayub mixes it up. Doesn't get the ball to turn too much. I think today for the first time there is a little bit of dew as well. All these days we've seen very little evidence of dew, but you can see the fielders are slipping when they're chasing the ball towards the boundary. The outfield's wet. Somewhere I think the bowlers are lucky that on the pitch when they're bowling the slow balls, the balls are gripping. It's not really coming onto the bat. Maybe that might change in a little while as the dew gets stronger. The record here in Dubai is the pitch just gets better, batting second, but we haven't seen signs when spinners have bowled or taken the pace off. So at the moment it seems like slow and steady wins the race. Yes, the asking rate still at 9, so there really is nothing to... But you need to have wickets in hand to be able to do that. Turning out to be a great game. India-Pakistan matches of late have been one-sided. And at the halfway stage we thought more of the same, but not to be. You can see it's palpable pressure on the batters. The free throw is when they know that if it goes wrong, freedom. There's always a little niggle of a situation currently with this part. A low score can always be tricky. That is having thrown their first 3 wickets away. Good start, Saim Ayub. Over just 4 runs coming up with 10 overs at 58 for 3 and 6. Pakistan. Cuti di warga mutia ini lah dek. Makan aja kan. Mana kau itu dah? Apa kan? Iतना उम्मीद ही कर रहे नहीं थे छोटे सीधा कैच हुआ पालो तो बाल ही कर दिया उड़ा दिया ना मेरे भाई, उड़ा दिया ना। मैंने बोला था डबल जैकपॉट चेंज होगा। फाइनल मैच विनर देखना अभी भी तो नीचे देखना है तो अभी के अभी हमारा टेलीग्राम चैनल क्योंकि जो इस पर अपडेट करते हैं वो ग्राउंड में बैठकर करते हैं। अगर आपको लाइव से पहले अपडेट हमारे टेलीग्राम चैनल से लेफ्ट हो जाना, चैनल ज्वाइन करो क्योंकि इस पर अपडेट करते हैं वो ग्राउंड में बैटलग्राम चैनल से लेफ्ट हो जाना। लाइव से भी 4 बॉल पहले मैच देखना है तो अभी के अभी हमारा
मुंडा से क्या मुंडा चले सकरो बड़े गोवा मैं चस कर गया नहीं में ये चस तो मैच कराई बेटे दस कर गए मैच टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो क्योंकि जो अपडेट करते हैं वो ग्राउंड बैठ कर करते हैं। अगर आपको लाइव से By Mashraf, 2 for 22. And Shaheen Shah really getting that 58 for 3. They need 89 wide rate is 8.9. And look at India's bowling. Kuldeep Yadav 4 wickets, but I thought my pick of those Indian bowlers was Varun Chakrabarti because he got 2 crucial wickets. A set Saizada Farhan, then after that Fakhar Zaman. And I think that really turned the tide. And then Kuldeep Yadav came in and picked up the pieces towards the end. Varun Chakrabarti for me was the game changer. Pakistan seemed to be just running away with the game. इमरान अभी ठीक है मेरे विकेट तो गिरी है उनका कसूर है बावन मुकम्मल गिनना था आखिर करती है जा बदलावा ठीक है And Abrar will be stuff. Then Varun. It was crucial for those two batters to talk to themselves and regroup. We had the Indian coach out there talking to these two guys. Nice looking shot, he'll get a single. The coach would have told them perhaps to keep going, not to take unnecessary risks. Don't miss out on scoring opportunities. Run the first run hard so you create an opportunity for the second run. It was a very intense talk that was happening with the Indian coach and the two batters. The Indian camp is slightly worried. I don't think Pakistan have put them under this kind of pressure for a long, long time, and they find that matters. There is Gautam Gambhir with the two batters. I like how Arshdeep Singh is just keeping his distance and just listening. Sighted ball, and his flat back is that could be a 6. And that's a terrific shot. Tilak Verma has been one of India's best batters in this DP World Asia Cup, and we're seeing why. And this is a very good shot because he's hit it between the fielders as well. When he's hit it, he knows there is a fielder at long on. He knows there is a fielder at deep mid wicket. He's hit it between those two. And there's the sense that we were talking about after a 6. The next ball has been hit for a single. That boundary, the 6 came after 17 deliveries for India. It's a good connection as well. See, no chance for those fielders. No chance. Well away from those two fielders. Just a great shot. Who's the guy who finished against Pakistan as well, Tilak Verma. And now we have Sanju Samson who's got the big game and taken a little longer, but now we see Sanju Samson bat with a bit more maturity, plays differently as per the situation. Now this is Tilak sweeps versus spin. He can go lofted high towards mid-wicket, and he's one of those Indian batters who likes to go the other way as well. It's not something that he finds something that is unorthodox. It's very much part of his DNA. Reverse sweep. $69 for 3. Key player Tilak Verma has been in form right through the tournament. And
Sanju Samson has had one Player of the Match award, but he hasn't battled up the order. He's got a chance to bat in far between. Night in Dubai, Pakistan, the final. They have to win this. Not been off platter by Pakistan tonight. Interesting career with Tilak in his first 16 innings, average of 33. Next 13, 74. The player in the spotlight. Yes, he got a promotion up the order, and that when you get a promotion up the order, you get more overs to bat and you score more. But it's just consistency that's admirable. And a great atmosphere against that match India-Sri Lanka. A lot of people turned out to be a super game with a super over as well. Tonight, this is unmatched what you're watching, and they're so involved in the game. They're sort of cheering the ball as he runs in. A dot ball is being cheered. Good shot, but he couldn't find the gap. Will make the crease in time. 2 dot balls. Good bit of fielding there. 2 dot balls. Now what is Samson going to do? Take a bit of a chance or what? Yeah. If you know Sanju Samson, he might be getting a little restless. Tilak has maybe gone down and said to him, no worries. Well, you can see already got some the atmosphere here. Stage of the game as well. It's another dot ball. Now you've got to worry about Sanju Samson. Yes, he's walking away, trying to take some deep breaths. Plenty of overs left. It's gone for the big one. And enough bat on that one to take it all the way. Just it's gone for the big one. And enough bat on that one to take it all the way. Yes, I think what Sain did was he thought that he would come down the pitch and therefore he pitched it short, and that's exactly what Samson was waiting for. And he hit it straight over long on. That's not an easy shot to play. That's a lovely shot from Sanju Samson, making up for those earlier 3 dot balls. Just amazing trust in the big game. Sanju Samson, so much to like about him. Not an easy shot to play. Straight down the pitch. And then this is what they've done, both of them. After a big shot, looking for a single. 76 for 3 now. Partnership building nicely, 56 now off 48. Both batters just a tick over 100 strike rate. A little bit of sense and composure which was needed from India's point of view. City off 47, just required rate still under 9. It's been in that situation for a little while now. Pakistan love a couple of tight overs just to push it up to around the 10
close to 11 mark, put a little bit of pressure on the middle to lower order. Waqar. Yeah, this game is on. For sure. Pakistan have to pick up a wicket. They had the opportunity to get Samson out. He was dropped at 12. The score was 42. Big opportunity came in their way. And it wasn't a hard catch. 9 and over this surface, I feel, with 7 wickets in hand. It shouldn't be a problem for India. Might be now. Top edge from Sanju Samson. Abrar has got लाइव से भी 4 बॉल पहले मैच देखना है तो अभी के अभी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। विकेट बोला था ना, इस ओवर में एक और विकेट आएगा। आ गया ना मेरे भाई विकेट। भाई 20 ओवर में कितना रन बनेगा देख लो, टेलीग्राम लिंक कमेंट बॉक्स में डला हुआ है, बता दिया गया है 20 ओवर में कितना रन बनेगा और मैच विनर कौन होगा ये बता दिया गया है। टेलीग्राम लिंक कमेंट बॉक्स में डला हुआ, ज्वाइन करो मेरे भाई, फास्ट ज्वाइन करो। विकेट बोला था ना, इस ओवर में एक और विकेट आएगा। आ गया ना मेरे भाई विकेट। भाई 20 ओवर में कितना रन बनेगा देख लो, टेलीग्राम लिंक कमेंट बॉक्स में डला हुआ है, बता दिया गया है 20 ओवर में कितना रन बनेगा और मैच विनर कौन होगा ये बता दिया गया है। टेलीग्राम लिंक कमेंट बॉक्स में डला हुआ, ज्वाइन करो मेरे भाई, फास्ट ज्वाइन करो। विकेट बोला था ना, इस ओवर में एक और विकेट आएगा। आ गया ना मेरे भाई विकेट। भाई 20 ओवर में कितना रन बनेगा देख लो, टेलीग्राम लिंक कमेंट बॉक्स में डला हुआ है, बता दिया गया है 20 ओवर में कितना रन बनेगा और मैच विनर कौन होगा ये बता दिया गया है। टेलीग्राम लिंक कमेंट बॉक्स में डला हुआ, ज्वाइन करो मेरे भाई, फास्ट ज्वाइन करो। विकेट बोला था ना, इस ओवर में एक और विकेट आएगा। आ गया ना मेरे भाई विकेट। भाई 20 ओवर में कितना रन बनेगा देख लो, टेलीग्राम लिंक कमेंट बॉक्स में डला हुआ है, बता दिया गया है 20 ओवर में कितना रन बनेगा और मैच विनर कौन होगा ये बता दिया गया है। टेलीग्राम लिंक कमेंट बॉक्स में डला हुआ, ज्वाइन करो मेरे भाई, फास्ट ज्वाइन करो। विकेट बोला था ना, इस ओवर में एक और विकेट आएगा। आ गया ना मेरे भाई विकेट। भाई 20 ओवर में कितना रन बनेगा देख लो, टेलीग्राम लिंक कमेंट बॉक्स में डला हुआ है, बता दिया गया है 20 ओवर में कितना रन बनेगा और मैच विनर कौन होगा ये बता दिया गया है। टेलीग्राम लिंक कमेंट बॉक्स में डला हुआ, ज्वाइन करो मेरे भाई, फास्ट ज्वाइन करो। विकेट बोला था ना, इस ओवर में एक और विकेट आएगा। आ गया ना मेरे भाई विकेट। भाई 20 ओवर में कितना रन बनेगा देख लो, टेलीग्राम लिंक कमेंट बॉक्स में डला हुआ है, बता दिया गया है 20 ओवर में कितना रन बनेगा और मैच विनर कौन होगा ये बता दिया गया है। टेलीग्राम लिंक कमेंट बॉक्स में डला हुआ, ज्वाइन करो मेरे भाई, फास्ट ज्वाइन करो। विकेट बोला था ना, इस ओवर में एक और विकेट आएगा। आ गया ना मेरे भाई विकेट। भाई 20 ओवर में कितना रन बनेगा देख लो, टेलीग्राम लिंक कमेंट बॉक्स में डला हुआ है, बता दिया गया है 20 ओवर में कितना रन बनेगा और मैच विनर कौन होगा ये बता दिया गया है। टेलीग्राम लिंक कमेंट बॉक्स में डला हुआ, ज्वाइन करो मेरे भाई, फास्ट ज्वाइन करो। विकेट बोला था ना, इस ओवर में एक और विकेट आएगा। आ गया ना मेरे भाई विकेट। भाई 20 ओवर में कितना रन बनेगा देख लो, टेलीग्राम लिंक कमेंट बॉक्स में डला हुआ है, बता दिया गया है 20 ओवर में कितना रन बनेगा और मैच विनर कौन होगा ये बता दिया गया है। टेलीग्राम लिंक कमेंट बॉक्स में डला हुआ, ज्वाइन करो मेरे भाई, फास्ट ज्वाइन करो। विकेट बोला था ना, इस ओवर में एक और विकेट आएगा। आ गया ना मेरे भाई विकेट। भाई 20 ओवर में कितना रन बनेगा देख लो, टेलीग्राम लिंक कमेंट बॉक्स में डला हुआ है, बता दिया गया है 20 ओवर में कितना रन बनेगा और मैच विनर कौन होगा ये बता दिया गया है। टेलीग्राम लिंक कमेंट बॉक्स में डला हुआ, ज्वाइन करो मेरे भाई, फास्ट ज्वाइन करो। विकेट बोला था ना, इस ओवर में एक और विकेट आएगा। आ गया ना मेरे भाई विकेट। भाई 20 ओवर में कितना रन बनेगा देख लो, टेलीग्राम लिंक कमेंट बॉक्स में डला हुआ है, बता दिया गया है 20 ओवर में कितना रन बनेगा और मैच the reason he's there. You're right, it was slower, it was slightly wider and it turned. It was just 81, down from 94 first ball down to 81 the second ball. The play's underway, but don't mind this from Abrar if you're just looking to get out of the over. It's been a brilliant over. If fire went in at the pads, so you can have your one, because all of a sudden the run rate's gone from 8.7 to 9.6. Even this ball here, if you can get out of it with a single, it's a good result. Yeah, it's about showing the responsibility of getting out of the over. Yeah, wonderful. Excellent over comes to an end. Wickets, 2 runs, 78 for all. Saeem Ayub has done a good job with the ball. Hasn't been his tournament with the bat.
They've been decent today. 2 overs for just 11. Left-handers to operate with now. Finding a little bit of turn. Left-handed batters, he bowls 92% of his deliveries are standard off break. For the right-handers, 82% are the carom ball. And the wicket of Sanju Samson was really clever from Abrar. It kept him nice and tight in the line with the stumps predominantly. Look at where he's bowling, off stump. Middle leg stump on that occasion. Middle stump there. That one there, middle and leg. And then just a little bit wider. And then this one really slow and really wide. It was clever bowling. Yeah, he's a match winner. Abrar. Required run rate over 10 now. He's got 1 over left. Abrar, Saim Ayub's got 1 more after this. Haris Rauf hardly been used. Good bowling. The slower you bowl, the ball spins a bit more. There's no real dew. Maybe the ball just getting a little greasy, little. The slower you bowl, the ball spins for the bowlers. No towels out at all yet, so that's a good sign. And for a fair contest all the way through. With the left-handers, the matchups are such a big thing nowadays. Wakara don't always go along with them, but you feel like they'll just keep Nawaz out of the attack at the moment with the left-handers at the crease. So Saim Ayub is filling in those overs and doing a great job of it. Oh, he's edged it. He's edged it. It won't go for 4. Oh, out. No, I don't think so. I don't think so. Go to the third. विकेट बोला था ना, इस ओवर में एक और विकेट आएगा. आ गया ना मेरे भाई विकेट. भाई 20 ओवर में कितना रन बनेगा देख लो. टेलीग्राम लिंक कमेंट बॉक्स में डला हुआ है. बता दिया गया है 20 ओवर में कितना रन बनेगा और मैच विनर कौन होगा ये बता दिया गया है. टेलीग्राम लिंक कमेंट बॉक्स में डला हुआ है. ज्वाइन करो मेरे भाई, फास्ट ज्वाइन करो. विकेट बोला था ना, इस ओवर में एक और विकेट आएगा. आ गया ना मेरे भाई विकेट. भाई 20 ओवर में कितना रन बनेगा देख लो. टेलीग्राम लिंक कमेंट बॉक्स में डला हुआ है. बता दिया गया है 20 ओवर में कितना रन बनेगा और मैच विनर कौन होगा ये बता दिया गया है. टेलीग्राम लिंक कमेंट बॉक्स में डला हुआ है. ज्वाइन करो मेरे भाई, फास्ट ज्वाइन करो. विकेट बोला था ना, इस ओवर में एक और विकेट आएगा. आ गया ना मेरे भाई विकेट. भाई 20 ओवर में कितना रन बनेगा देख लो. टेलीग्राम लिंक कमेंट बॉक्स में डला हुआ है. बता दिया गया है 20 ओवर में कितना रन बनेगा और मैच विनर कौन होगा ये बता दिया गया है. टेलीग्राम लिंक कमेंट बॉक्स में डला हुआ है. ज्वाइन करो मेरे भाई, फास्ट ज्वाइन करो. विकेट बोला था ना, इस ओवर में एक और विकेट आएगा. आ गया ना मेरे भाई विकेट. भाई 20 ओवर में कितना रन बनेगा देख लो. टेलीग्राम लिंक कमेंट बॉक्स में डला हुआ है. बता दिया गया है 20 ओवर में कितना रन बनेगा और मैच विनर कौन होगा ये बता दिया गया है. टेलीग्राम लिंक कमेंट बॉक्स में डला हुआ है. ज्वाइन करो मेरे भाई, फास्ट ज्वाइन करो. विकेट बोला था ना, इस ओवर में एक और विकेट आएगा. आ गया ना मेरे भाई विकेट. भाई 20 ओवर में कितना रन बनेगा देख लो. टेलीग्राम लिंक कमेंट बॉक्स में डला हुआ है. बता दिया गया है 20 ओवर में कितना रन बनेगा और मैच विनर कौन होगा ये बता दिया गया है. टेलीग्राम लिंक कमेंट बॉक्स में डला हुआ है. ज्वाइन करो मेरे भाई, फास्ट ज्वाइन करो. विकेट बोला था ना, इस ओवर में एक और विकेट आएगा. विकेट कॉल है मेरे भाई, विकेट कॉल है. नीचे लिंक पे जाके चेक करो कितने ओवर में कौन सा विकेट जाएगा, कितने ओवर में कितना रन बनेगा. फिक्स अपडेट दे दी है. कौन सी टीम जीतेगी, टॉस कौन जीतता, मैच कौन जीतता, फुल स्क्रिप्टेड अपडेट. क्रिकेट में हार के परेशान हो तो नीचे बाबा ठाकुर के चैनल का लिंक है, जल्दी से जाओ, ज्वाइन करो और तगड़ा पैसा जीतो मेरे भाई. विकेट कॉल है मेरे भाई, विकेट कॉल है. नीचे लिंक पे जाके चेक करो कितने ओवर में कौन सा विकेट जाएगा, कितने ओवर में कितना रन बनेगा. फिक्स अपडेट. I'm being told. I think it was Fakhar Zaman he was on the field for. He might have just come back on the field, has he? He's still off. Fakhar Zaman, but it was a brilliant bit of work from Hassan Ali. Right. Haris Rauf is back after just 1 over early on. Hit hard.
Pace on and 4 for Shivam Dube. Very good start of the over for India. Dube just spanked that one through cover. He had a little bit of room. He's a tall man. He stood very tall and he made sure that he get in the middle of the bat. Look at those wrists coming into play. Only had 22 meters to spear that gap. Hit so hard. That will ease some pressure off Indian batters. Yeah, with that field set, you say it's a poor start from Haris Rauf. Mid-off inside the circle, cover inside the circle. It was just short and wide. Just go back and take a look at this. It's just not sure. To have a look from this angle, see the end on it. There's a little edge. It was brilliant work from Hassan Ali. Now, that's poor. I think that's really jumps out of the ground. He just got to rip the stumps out of the ground. It was just, he's missed the first stump and actually flipped the bail off on the opposite side. He's trying to be too cute. Yeah, he was clearly out of crease when he attempted for the first time. Another boundary, beautiful shot. Slow delivery, but 2-4. Excellent shot. Change of plan from the Indian batters. They're going after Haris Rauf. Yeah, it's easy to say after the fact, but you have to keep pushing that run rate up and up and up, put pressure on. So I just think that I'd have finished off with Abrar and Seymour because they were bowling so well. You take those two through to the 16th over, and all of a sudden that run rate could have been 13-14. Nine off 3. Let's start to the over for India. Well, Pakistan's best chance is with the spinners. And they still have overs remaining. Abrar's got one for Saim Ayub, and even Nawaz has bowled only 1 over. Yes, Haris Rauf will be key, maybe right at the end, in the last 3 overs, maybe 4 overs. But at this stage, you're right, really. The spinners were doing good job. Why to change them? Easing that into the onside for 1. Few opportunities have come Pakistan's way. There's a drop catch and of course a couple of run-outs. Didn't really cost much that miss run-out of Shubman Gill, but this might be costly, this run-out, this missed run-out by Mohammad Haris. Swung away and all the way for 6. Terrific over from India's point of view. 17 coming from it, the 100 up with 5 to go. They need 47 from 30. Well, the head coach is fuming. He is not happy. That is one expensive over from Haris Rauf in the context of the game. He needed a good over there, and he just bowled some pies.
17 of the last over. Bras back from a different end, from the far end. And that is sailing over deep mid-wicket. Just compounding the problems now for Pakistan. Well, the long levers coming into play. A tall man, Shivam Dube, and using that lag so nicely. There you go. I'll take some of that. 77 meters. Previous over and now start of this over. India right on top. And now the pressure. But this doesn't happen, Waka, if Abrar bowls the last over from our commentary end. Salman Aghar's made a huge error. He's now asking Abrar to bowl from a different end to which he's bowled beautifully from. And coming in after they've just taken 17 off an over. Can he get there? He can't get there. Oh, Harris Ralph couldn't quite make the ground. Now they might pinch another halfway down. A little bit of confusion now. Every time when things get little tense, there's a panic button in Pakistan's camp. We saw in the first inning when they were batting, they kept on losing wickets and end up 146. And now when they had things in control and a poor over and everyone's sort of running around, there's no method right now. This game is still not over. Stay composed, that's the key. Yeah, they're still a wicket away. 1 or 2 wickets. It's still 38 runs. Required rate now down to 8.44. Again, you're bowling to 2 left-handers who are both strong leg side. First and foremost, the option to come around the wicket. I mean, Mike Hesson there, he's telling him, stay over the wicket and pace off wide of off-stump. Everything Harris Ralph did in that previous over just didn't make sense. Dooley, this is not the time when you search for wickets. This is a time when you bowl a good over. Just be a team man. Because when you're searching for wicket, that's what you're going to do. You're going to bowl poor deliveries. You're going to not bowl to the plan. And that's what Harris Ralph did. Searching for wicket. You don't need to. Now they got 17 of that over. Previous over, 9 of this. You know, things are slipping out of the hands again. Pulled it back well after the 6 off the first ball, but the damage has been done then. Where does he go to next? I mean, if he goes to Saimo, then you can say he just made an error, because those two should have bowled the last over and this over from the right ends, the ends that they were controlling things from so well. Indian batters are very sensible. They fetched a good big over, they've got a boundary, and now they're being very, very sensible. Just playing around with the bowler, and that's Tilak Verma's 50. What a wonderful knock in a circumstance here, tough conditions. 111 to 4. And 3 sixes. He's played really nicely. He's been in really good form. 50 up for Tilak Verma. 41 balls. 3 fours and 3 sixes. He's played really nicely. He's been in really good form throughout this tournament.
Another fine knock from him. He's steered that ship there. There's no doubt that Pakistan have made some A pressure match. It's a final. 3 wickets had gone down quickly when he was out there. And then to hold his nerve, yet score at a good rate. Really, really excellent knock. This partnership now 34 from 23, so 2 good ones back to back. Appreciated by his teammates. Yeah, really top stuff. Outstanding work from him. He's got an excellent temperament. And it's come to the fore today in a big match. Right, the big quicks back, the big left arm. Shaheen Shah Afridi is back into the attack and needs to create some havoc here straight away if they've any chance at all. A little bit leg side first up, eased away. Just need to keep ticking over at the moment. Opportunity to have a look at Tariq Farmer's 50. 3 4s, 3 6s. When he first arrived, he played some beautiful shots. Got a couple on the leg side he could put away easily, but he's unhurried throughout this entire knock. Yes, his game awareness, his shot selection, his choice of targeting the right bowler, first class. Leading edge, falls safely. He's been the pick of the bowler, Shine, today at his probably best in this tournament. Where it is paced, the lengths have been good. He's in his final over. There again, a change of pace. 3 overs, 3.21 for 16. Pakistan need a good tight over here, where they don't give more than 5 runs or so. A big error made with that 1 over from Haris Rauf, taking the spinners off. A little bit leg side. A dot ball, they need a few more of those. Try and apply a little bit of pressure. 34 from 21 now. Partnership 36 off 26. Yes, these next 3 balls are 3 very important deliveries. The required rate still 9.71. पता करने वाले गेम एक कवर चंगा निकल पिया था खुदा भाई 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 गलत बात तो गेम थी आ भाई फेफी आ वैसी नहीं हमारा लगला वाला के तो दे दे शाहीन अफरीदी इज द मोस्ट बॉलर भाई 2 मिनट हो जाए क्योंकि वाईफाई लेट इसलिए वाईफाई स्लो हो गया है 2 मिनट हो गया सिर्फ 2 मिनट अभी 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 ये कनेक्ट हो रहा है ये हो गया बस 2 मिनट सिर्फ 2 मिनट रिस्टोर्ड हो रहा है दाना किन गया 2 मिनट सिर्फ 2 मिनट भाई 2 मिनट 2 मिनट में ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा हारिस रऊफ को भेजो वेल इंडिया दी मामले चले ठीक है सारा बाले खैर 1 for 20 off his 4. 30 from 18 balls. 10 and over. It's required from here by India. And one would imagine this will be the over India will target. They'll want to use the pace of Rauf. And his last over went for 17, so he'll have that in the back of his mind. Let's hope he's forgotten that from a Pakistan point of view. Got to come back strong after that last over. विकेट कॉल है नीचे लिंक पे जाके चेक करो कितने ओवर में कौन सा विकेट जाएगा कितने ओवर पे रन बनेगा फिक्स अपडेट दे दी है कौन सी टीम जीतेगी टॉस कौन जीतता मैच कौन जीतता अपडेट क्रिकेट में हार के परेशान हो तो नीचे बाबा ठाकुर के चैनल का लिंक है जल्दी से जाओ ज्वाइन करो और तगड़ा पैसा जीतो मेरे भाई विकेट कॉल है मेरे भाई विकेट कॉल है नीचे लिंक पे जाके चेक करो कितने ओवर में कौन सा विकेट जाएगा कितने
कितना रन बनेगा Throughout the tournament, he's been amazing. He's been superb with this knot. 54 or 45. He's been the anchor. उड़ा दिया ना मेरे भाई, उड़ा दिया ना। मैंने बोला था डबल जैकपॉट चाहिए। जो फाइनल मैच विनर देखना अभी भी, तो नीचे लिंक है, लिंक पे क्लिक करके मेरे भाई चैनल ज्वाइन कर लो। नीचे जाओ, लिंक पे क्लिक करो और चैनल ज्वाइन कर दो। इंडिया वर्सेज पाकिस्तान में बुक की होगी, गार्ड मार देंगे। फाइनल कौन जीतेगा, किस स्टाइल में जैकपॉट उड़ेगा, पाकिस्तान उड़ाएगा इंडिया। फुल स्क्रिप्टेड अपडेट डाल दिए मेरे भाई, 20 ओवर में कितना रन बनेगा। फुल स्क्रिप्टेड अपडेट है, नीचे लिंक पे क्लिक करो और ज्वाइन कर लो मेरे भाई। जल्दी जाओ, ज्वाइन कर लो। लास्ट चांस है, लास्ट मौका मेरे भाई, जल्दी जाओ, ज्वाइन करो। This field placing, there's no third man in position. There's a man at deep backward square on the offside and a man sweeping on the offside. Oh, that's very wide. Off the cut area perhaps. Well, we said the message was to bowl wide, but not that wide. Stay on the strip. Yeah, that would help. Is it a no ball? That's the question here. Has it gone off the cut strip? If it lands after the stumps, it's not a no ball. It's only wide on that occasion. It's got to bounce before the stumps and be off the cut area to be a no ball. Making sure it is after the stumps. It is only just. That'll just be a wide. There we go. But a very wide. It's got to be said. Right, it's got to get back on target now, Haris Ralph. Really important over this. He is gone wide again. Brings that man into play, just the one. Tracks on the slower side. He's presuming they're not going to get a thin outside edge and disappear to third man. Go a bit squarer with those shots. He's a tall man. Shivam Dube might just alter his guard a bit. Knowing what Haris Ralph is going to bowl, probably just get a cross. उड़ा दिया ना मेरे भाई, उड़ा दिया ना। मैंने बोला था डबल जैकपॉट चेंज होगा। फाइनल मैच विनर देखना अभी भी, तो नीचे लिंक है, लिंक पे क्लिक करके मेरे भाई चैनल ज्वाइन कर लो। जल्दी से जाओ, लिंक पे क्लिक करो और चैनल ज्वाइन कर दो। इंडिया वर्सेज पाकिस्तान में बुक की होगी, गार्ड मार देंगे। फाइनल कौन जीतेगा, किस स्टाइल में जैकपॉट उड़ेगा, पाकिस्तान उड़ाएगा इंडिया। फुल स्क्रिप्टेड अपडेट डाल दिए मेरे भाई, 20 ओवर में कितना रन बनेगा। फुल स्क्रिप्टेड अपडेट है, नीचे लिंक पे क्लिक करो और ज्वाइन कर लो मेरे भाई। जल्दी जाओ, ज्वाइन कर लो। लास्ट चांस है, लास्ट मौका मेरे भाई, जल्दी जाओ, ज्वाइन करो। उड़ा दिया ना मेरे भाई, उड़ा दिया ना। मैंने बोला था डबल जैकपॉट चेंज होगा। फाइनल मैच विनर देखना अभी भी, तो नीचे लिंक है, लिंक पे क्लिक करके मेरे भाई चैनल ज्वाइन कर लो। जल्दी से जाओ, लिंक पे क्लिक करो और चैनल ज्वाइन कर दो। इंडिया वर्सेज पाकिस्तान में बुक की होगी, गार्ड मार देंगे। फाइनल कौन जीतेगा, किस स्टाइल में जैकपॉट उड़ेगा, पाकिस्तान उड़ाएगा इंडिया। फुल स्क्रिप्टेड अपडेट डाल दिए मेरे भाई, 20 ओवर में कितना रन बनेगा। फुल स्क्रिप्टेड अपडेट है, नीचे लिंक पे क्लिक करो और ज्वाइन कर लो मेरे भाई। जल्दी जाओ, ज्वाइन कर लो। लास्ट चांस है, लास्ट मौका मेरे भाई, जल्दी जाओ, ज्वाइन करो। उड़ा दिया ना मेरे भाई, उड़ा दिया ना। मैंने बोला था डबल जैकपॉट चेंज होगा। फाइनल मैच विनर देखना अभी भी, तो नीचे लिंक है, लिंक पे क्लिक करके मेरे भाई चैनल ज्वाइन कर लो। जल्दी से जाओ, लिंक पे क्लिक करो और चैनल ज्वाइन कर दो। इंडिया वर्सेज पाकिस्तान में बुक की होगी, गार्ड मार देंगे। फाइनल कौन जीतेगा, किस स्टाइल में जैकपॉट उड़ेगा, पाकिस्तान उड़ाएगा इंडिया। फुल स्क्रिप्टेड अपडेट डाल दिए। Pretty good shot there, 143. Power off. Onto the leg side for a couple. Still a tidy over. Now the hard deliveries come. 24 for 14. That's the equation at this stage. Terrific length and line. Only the one. Good stuff from Haris Ralph. Pakistan finishes well. Stuck to his plan and is almost हमारे पूरा दिन क्या करें हमारे लेकिन ओ हिंदे हमारा लास्ट बाल पे ही आ गई
उड़ा दिया था मेरे भाई, उड़ा दिया ना। मैंने बोला था डबल जैकपॉट चेंज होगा। फाइनल मैच विनर देखना अभी भी, तो नीचे लिंक है, लिंक पे क्लिक करके मेरे भाई चैनल जल्दी से जाओ, लिंक पे क्लिक करो और चैनल ज्वाइन कर दो। इंडिया वर्सेस गार्ड मार देंगे। फाइनल कौन जीतेगा, स्टाइल में जैकपॉट उड़ेगा, पाकिस्तान उड़ेगा इंडिया। फुल स्क्रिप्टेड अपडेट डाल दिए मेरे भाई, 20 ओवर में कितना रन बनेगा। फुल स्क्रिप्टेड अपडेट है, नीचे लिंक पे क्लिक करो और कर लो मेरे भाई, जल्दी जाओ ज्वाइन कर लो। लास्ट चांस है, लास्ट मौका मेरे भाई, जल्दी जाओ ज्वाइन करो। उड़ा दिया ना मेरे भाई, उड़ा दिया ना। मैंने बोला था डबल जैकपॉट चेंज होगा। फाइनल मैच विनर देखना अभी भी, तो नीचे लिंक है, लिंक पे क्लिक कर लो। जल्दी से जाओ, लिंक पे क्लिक करो और चैनल ज्वाइन कर दो। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में बुक्कियों की गार्ड मार देंगे। फाइनल कौन जीतेगा, स्टाइल में जैकपॉट उड़ेगा, पाकिस्तान उड़ेगा इंडिया। फुल स्क्रिप्टेड अपडेट डाल दिए मेरे भाई, 20 ओवर में कितना रन बनेगा। फुल स्क्रिप्टेड अपडेट है, नीचे लिंक पे क्लिक करो, ज्वाइन कर लो मेरे भाई, जल्दी जाओ ज्वाइन कर लो। लास्ट चांस है, लास्ट मौका। उड़ा दिया ना मेरे भाई, उड़ा दिया ना। मैंने बोला था डबल जैकपॉट चेंज होगा। फाइनल मैच विनर देखना अभी भी, तो नीचे लिंक है, लिंक पे क्लिक करके मेरे भाई चैनल जल्दी से जाओ, लिंक पे क्लिक करो, चैनल ज्वाइन कर लो। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में बुक्कियों की गार्ड मार देंगे। फाइनल कौन जीतेगा, किस स्टाइल में जैकपॉट उड़ेगा, पाकिस्तान उड़ेगा इंडिया। फुल स्क्रिप्टेड अपडेट डाल दिए मेरे भाई, 20 ओवर में कितना रन बनेगा। फुल स्क्रिप्टेड अपडेट है, नीचे लिंक पे क्लिक करो और ज्वाइन कर लो मेरे भाई, जल्दी जाओ ज्वाइन कर लो। लास्ट चांस है, लास्ट मौका मेरे भाई, उड़ा दिया ना मेरे भाई। 53 off 36 between these two guys, and it's been pretty much shared with Dubé just scoring 6 more. विकेट कॉल है मेरे भाई, विकेट कॉल है। नीचे लिंक पे जाके चेक करो कितने ओवर में कौन सा विकेट जाएगा, कितने ओवर में कितना रन बनेगा। फिक्स अपडेट देती है कौन सी टीम जीतेगी, टॉस कौन जीता, मैच कौन जीता। फुल स्क्रिप्टेड अपडेट, क्रिकेट में हार के परेशान हो तो नीचे बाबा ठाकुर के चैनल का लिंक है, जल्दी से जाओ ज्वाइन करो और तगड़ा पैसा जीतो मेरे भाई। विकेट कॉल है मेरे भाई, विकेट कॉल है। नीचे लिंक पे जाके चेक करो कितने ओवर में कौन सा विकेट जाएगा, कितने ओवर में कितना रन बनेगा। फिक्स अपडेट देती है कौन सी टीम जीतेगी, टॉस कौन जीता, मैच कौन जीता। फुल स्क्रिप्टेड अपडेट, क्रिकेट में हार के परेशान हो तो नीचे बाबा ठाकुर के चैनल का लिंक है, जल्दी से जाओ ज्वाइन करो और तगड़ा पैसा जीतो मेरे भाई। विकेट कॉल है मेरे भाई, विकेट कॉल है। नीचे लिंक पे जाके चेक करो कितने ओवर में कौन सा विकेट जाएगा, कितने ओवर में कितना रन बनेगा। फिक्स अपडेट देती है कौन सी टीम जीतेगी, टॉस कौन जीता, मैच कौन जीता। फुल स्क्रिप्टेड अपडेट, क्रिकेट में हार के परेशान हो तो नीचे बाबा ठाकुर के चैनल का लिंक है, जल्दी से जाओ ज्वाइन करो और तगड़ा पैसा जीतो मेरे भाई। विकेट कॉल है मेरे भाई, विकेट कॉल है। नीचे लिंक पे जाके चेक करो कितने ओवर में कौन सा विकेट जाएगा, कितने ओवर में कितना रन बनेगा। फिक्स अपडेट दे Yes, but it's a game worthy of a final. Immense pressure on both sides. 36 balls for this 53-run partnership. Dubé playing smart, more than smart. 28 from 18. Some vital sixes at crucial times. Yeah, really good stuff from Shubham Dubé. He's been terrific, scoring most of the runs in the partnership, and that 6 has given him some serious breathing space. 17 from 12. Take 2 to Fahim. Oh, he's in trouble. What's he got to do? Prepping, I think. Definitely prepping. It's tough, the conditions there. It's hot, humid. And second time he's pulled up in that area just before delivering the ball. 130 for 4. Shahid Afridi just coming there straight away just to try and help if he can. As we look at one of the options. Ralph. He's going to be bowling the next over. Shaheen's done. Numbers only bowled the one over at this stage. He has bowled late in innings before, I think, as we all remember. विकेट कॉल है मेरे भाई, विकेट कॉल है। नीचे लिंक पे जाके चेक करो कितने ओवर में कौन सा विकेट जाएगा, कितने ओवर में कितना रन बनेगा। फिक्स अपडेट देती है कौन सी टीम जीतेगी, टॉस कौन जीता, मैच कौन जीता। फुल स्क्रिप्टेड अपडेट, क्रिकेट में हार के परेशान हो तो नीचे बाबा ठाकुर के चैनल का लिंक है, जल्दी से जाओ ज्वाइन करो और तगड़ा पैसा जीतो मेरे भाई। विकेट कॉल है मेरे भाई, विकेट कॉल है। नीचे लिंक पे जाके चेक करो कितने ओवर में कौन सा विकेट जाएगा, कितने ओवर में
सबर के मत तक में ना भाई जी मैं आउट करे 4-5 घंटे ये करूँ मैं याद ये दो बरंदे बंचे करूँ दो बरंदे बंचे करूँ उन्होंने को तो सापड़ी के दे यो पता क्या पता रन बनेगा फिक्स अपडेट दे दी है कौन सी टीम जीतेगी टॉस कौन जीता मैच कौन जीता फुल स्क्रिप्टेड अपडेट है जल्दी से जाओ ज्वाइन करो और तगड़ा पैसा जीतो जीतेगी टॉस उड़ा दिया ना मेरे भाई उड़ा दिया ना डबल जैकपॉट चेंज होगा फाइनल मैच विनर देखना अभी तो नीचे लिंक है लिंक पे क्लिक मेरे भाई चैनल ज्वाइन कर लो जल्दी से जाओ लिंक पे क्लिक करो और चैनल ज्वाइन करो कैमरे बुला दे मुझे निकल वो निकलेंगे क्या आगे फिर जॉली भाई ने कैमरा यार गए अरे क्या अरे नहीं भाई मत कर के अरे क्या ओ आ गिरना न ड्रामा के ओए तो धोखे रखते कितनी बड़े क्या सर इंडिया फुल स्क्रिप्टेड अपडेट डाल दिए मेरे भाई 20 मार देंगे ओ ठीक है और कहना शुरू ही कर दिया ठीक है भाई फाइनल कौन जीतेगा किस स्टाइल में जैकपॉट उठेगा है नीचे लिंक पे और ज्वाइन कर लो विनर देखना अभी भी तो नीचे लिंक है लिंक पे क्लिक करके मेरे भाई चैनल ज्वाइन कर लो जल्दी से जाओ लिंक क्लिक करो और चैनल ज्वाइन कर लो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में बुकियों की गार्ड मार देंगे फाइनल कौन जीतेगा किस स्टाइल में जैकपॉट उठेगा पाकिस्तान उड़ेगा इंडिया फुल ये मेरे भाई 20 ओवर में कितना रहेगा फुल स्क्रिप्टेड अपडेट है नीचे लिंक पे क्लिक करो और ज्वाइन कर लो मेरे भाई जल्दी जाओ ज्वाइन कर लो लास्ट चांस है लास्ट मौका है मेरे भाई जल्दी जाओ ज्वाइन करो उड़ा दिया ना मेरे भाई उड़ा दिया ना मैंने बोला था फाइनल मैच विनर देना अभी भी तो नीचे लिंक है लिंक पे क्लिक करके मेरे भाई चैनल जल्दी से जाओ लिंक पे क्लिक करो और चैनल ज्वाइन कर लो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में गार्ड मार देंगे फाइनल कौन जीतेगा किस स्टाइल में जैकपॉट उठेगा पाकिस्तान उठेगा इंडिया फुल स्क्रिप्टेड अपडेट डाल दिए मेरे भाई Wide in ball earlier, but I do believe his matchups are overplayed often. Mohamed Nawaz, I think, is a very fine ball, and I think he should have been introduced earlier. Perhaps a mistake that was made. Was brought back in for that one over. Right, he's back on his feet. Let's hope he's going to be able to get through this over. He hasn't won delivery yet. He is looking to complete his spell. 2 for 22 his return. Got a huge wicket right at the top, that of Abhishek Sharma. It's a huge break, there's a long break. Not much time left, just 12 deliveries left in this game. 17 is what India need. Five and a half minutes. Now there's the Phil plot. 3 on the outside of the fence. उड़ा दिया ना मेरे भाई उड़ा दिया ना मैंने बोला था डबल जैकपॉट चेंज होगा फाइनल मैच विनर देखना अभी भी तो नीचे लिंक है लिंक पे क्लिक करके मेरे भाई चैनल ज्वाइन कर लो जल्दी से जाओ लिंक पे क्लिक करो और चैनल ज्वाइन कर लो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में बुकियों की गार्ड मार देंगे फाइनल कौन जीतेगा Just the single. गुड It's pretty tense out there. चीज को खाने के लिए बचा है आपको Shivam Dubey will look for trouble, ये चलता है ना बहुत ही दोनों especially if he holds anything with pace off. Look to go down the ground. It's an area of strength. He's been successful with that bowling wide. Oh, that's short. Hits that well enough, down for 1. Really got to try and pick up a wicket or 2 here, Pakistan. At this stage is okay. An over without a bobby.
Skipper's been very busy today for Pakistan on the field. Tilak back on strike. So it goes that route. Log on in the game again. 3 singles through this. Now there is long on. It's long off this team wicket. The offsides were the options really to get something in this range. Go down the ground. Oh, he's hit that pretty well. That's a really good shot. Yeah, that's right. That's a good shot indeed. Wide of the man long on. Hit it strong, flat for 4. 1 bounce. This is good batting. Smart cricket. The man long on. And you go and fix that one. Short delivery. Hit it strong, flat for 4. 1 bounce. This is on cricket. Oh man, he's got long levers and long reach. There's Washington the offside. He's back across so that he can reach on. And his height is a tall man, 6'5" inches tall. Needed every inch there to reach for that and put it away to the boundary. It's 7 of this over now. Strike rate is 165. How valuable this knock has been. 2 balls left in the over, 10 from 8's required. Big swing and a miss. Looking to go straight back past the bottom of that. No connection. One ball left in this over. And if you'll try that again, because that just correct a little bit. Probably right. Change in pace slowly. Behind the operator. So for the last over, there'll be an extra fielder in the ring. ये बता दिया गया टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करो मेरे भाई फास्ट ज्वाइन करो विकेट इस ओवर में ना इन्हें हिट ना धीरे धीरे देख लो टेलीग्राम लिंक कमेंट बॉक्स में डाला हुआ है इस ओवर में कितना रन बनेगा और मैच विनर कौन होगा ये बता दिया गया पहले डूब वाला मैच पता लगा पहले डूब वाला विकेट बोला इस ओवर में एक और विकेट आया इस ओवर में कितना रन बनेगा देख लो कमेंट बॉक्स में डाला हुआ है बता दिया गया इस ओवर में कितना रन बनेगा और मैच विनर कौन होगा ये बता दिया गया टेलीग्राम लिंक बॉक्स में डाला हुआ ज्वाइन करो मेरे भाई फास्ट ज्वाइन करो विकेट बोला था ना इस ओवर में एक और विकेट आएगा आ गया ना मेरे भाई विकेट भाई 20 ओवर में कितना रन बनेगा टेलीग्राम लिंक कमेंट बॉक्स में डाला हुआ है बता दिया गया 20 ओवर में कितना बनेगा और मैच विनर कौन होगा ये बता दिया गया टेलीग्राम लिंक बॉक्स में डाला हुआ ज्वाइन करो मेरे भाई फास्ट ज्वाइन करो विकेट बोला था ना 20 ओवर में एक और विकेट आएगा मेरे भाई विकेट भाई 20 ओवर में कितना बनेगा देख लो टेलीग्राम लिंक कमेंट बॉक्स में डाला हुआ है बता दिया 20 ओवर में कितना रन बनेगा और मैच विनर कौन होगा ये बता दिया गया टेलीग्राम लिंक कमेंट बॉक्स में डाला हुआ ज्वाइन करो मेरे भाई फास्ट विकेट बोला था ना इस ओवर में एक और विकेट आ गया ये भी भाई 20 ओवर में कितना रन बनेगा देख लो टेलीग्राम लिंक कमेंट बॉक्स में डाला बता दिया गया 20 ओवर में कितना रन बनेगा और मैच विनर कौन होगा ये बता दिया गया टेलीग्राम लिंक कमेंट बॉक्स में डाला ज्वाइन करो मेरे भाई फास्ट ज्वाइन करो विकेट बोला था ना इस ओवर में एक और विकेट आएगा आ गया ना मेरे भाई विकेट भाई 20 ओवर में कितना रन बनेगा देख लो टेलीग्राम लिंक कमेंट बॉक्स में डाला हुआ है बता दिया गया 20 ओवर में कितना रन बनेगा और मैच विनर कौन होगा ये बता दिया गया टेलीग्राम लिंक कमेंट बॉक्स में डाला हुआ ज्वाइन करो मेरे भाई फास्ट ज्वाइन करो विकेट बोला था ना 20 ओवर में एक और विकेट आएगा आ गया ना मेरे भाई विकेट भाई 20 ओवर में कितना रन बनेगा देख लो टेलीग्राम लिंक कमेंट बॉक्स में डाला हुआ है बता दिया गया 20 ओवर में कितना रन बनेगा और मैच विनर कौन होगा ये बता दिया गया टेलीग्राम लिंक कमेंट बॉक्स में डाला हुआ ज्वाइन करो मेरे भाई फास्ट ज्वाइन करो विकेट बोला था ना इस ओवर में एक और विकेट आएगा आ गया ना मेरे भाई विकेट भाई 20 ओवर में कितना रन बनेगा देख लो टेलीग्राम लिंक कमेंट बॉक्स में डाला हुआ है बता दिया गया 20 ओवर में कितना रन बनेगा और मैच विनर कौन होगा ये बता दिया गया टेलीग्राम लिंक कमेंट बॉक्स में डाला हुआ ज्वाइन करो मेरे भाई फास्ट ज्वाइन करो मैंने टू द हिल कर दिया आगे गया Defending the last over, want that extra fielder out. आज ये पानी पानी Defend इसकी को क्या चक्कर लग गई चक्कर मार
us out. If India win, then win their ninth cup. ये सही ने दाव आके कर रहे हो वही बात है 8 on 5. Here's the boundary riders, only 4. Two not out. And it's got the 6. What a shot that is. Brilliant under pressure. This is magnificent. Right out of the screws. And he's picked the bones out of that one as he smashes it into the crowd. There's Gautam Gambhir. He knows the importance of that hit. What it does, it's just too needed now for India. Crowd erupt. विकेट बोला था ना इस ओवर में एक और विकेट आएगा आ गया ना मेरे भाई विकेट भाई 20 ओवर में कितना रन बनेगा देख लो टेलीग्राम लिंक कमेंट बॉक्स में डला हुआ है बता उड़ा दिया ना मेरे भाई उड़ा दिया ना मैंने बोला था डबल जैकपॉट चेंज होगा फाइनल मैच विनर देखना अभी भी तो नीचे लिंक है लिंक पे क्लिक करके मेरे भाई चैनल ज्वाइन कर लो जल्दी से जाओ लिंक पे क्लिक करो और चैनल ज्वाइन कर लो इंडिया वर्सेज पाकिस्तान में बुक्कियों की गार्ड फाड़ देंगे फाइनल कौन जीतेगा किस स्टाइल में जैकपॉट उठेगा पुलिस क्रिकेट अपडेट डाल के मेरे भाई 20 क्रिकेट अपडेट है नीचे लिंक पे क्लिक करो और ज्वाइन कर लो मेरे भाई जल्दी जाओ ज्वाइन कर लो लास्ट चांस है लास्ट मौका उड़ा दिया ना मेरे भाई उड़ा दिया ना मैंने बोला था डबल जैकपॉट चेंज होगा फाइनल मैच विनर देखना अभी भी तो नीचे लिंक है लिंक पे क्लिक करके मेरे भाई चैनल ज्वाइन कर लो जल्दी से जाओ लिंक पे क्लिक करो और चैनल ज्वाइन कर लो इंडिया वर्सेज पाकिस्तान में की गार्ड फाड़ देंगे फाइनल कौन जीतेगा टाइम में जैकपॉट उठेगा पाकिस्तान उड़ेगा पुलिस क्रिकेट अपडेट डाल दिए मेरे भाई 20 ओवर में कितना रन बनेगा पुलिस क्रिकेट अपडेट है नीचे लिंक पे क्लिक करो और ज्वाइन कर लो मेरे भाई जल्दी जाओ ज्वाइन कर लो लास्ट चांस है लास्ट मौका है मेरे भाई जल्दी जाओ ज्वाइन करो उड़ा दिया ना मेरे भाई उड़ा दिया ना मैंने बोला था डबल जैकपॉट चेंज होगा फाइनल मैच विनर देखना अभी भी तो नीचे लिंक है लिंक पे क्लिक करके मेरे भाई चैनल ज्वाइन कर लो जल्दी से जाओ लिंक पे जैकपॉट मेरे भाई आज के मैच में क्यों तो इंडिया हारेगा क्यों पाकिस्तान जीतेगा रीजन के साथ बताया है टेलीग्राम चैनल पे जल्दी से जाओ लिंक को ज्वाइन करो मेरे भाई और चेक कर लो जल्दी से जाओ और मेरे भाई जैकपॉट मेरे भाई आज के मैच में क्यों तो इंडिया हारेगा क्यों पाकिस्तान जीतेगा रीजन के साथ बताया है टेलीग्राम चैनल पे जल्दी से जाओ लिंक को ज्वाइन करो मेरे भाई और चेक कर लो जल्दी से जाओ और मेरे भाई जैकपॉट मेरे भाई आज के मैच में क्यों तो इंडिया हारेगा क्यों पाकिस्तान जीतेगा रीजन के साथ बताया है टेलीग्राम चैनल पे जल्दी से जाओ लिंक को ज्वाइन करो मेरे भाई और चेक कर लो जल्दी से जाओ और मेरे भाई जैकपॉट मेरे भाई आज के मैच में क्यों तो इंडिया हारेगा क्यों पाकिस्तान जीतेगा रीजन के साथ टेलीग्राम चैनल पे जल्दी से जाओ लिंक को ज्वाइन करो मेरे भाई और चेक करो जल्दी से जाओ और मेरे भाई यार कोई बात नहीं हार जीत होती रहती है कोला भाई बाकी नसीब की बात है कोई मसला नहीं नेक्स्ट टाइम ज़रूर चलेंगे बाकी अपनी तरफ से तो पूरा हाँ अरे भाई चलो खाट अंदर कर तो चलो आंधा भी यहाँ सफर ही नहीं चल चल टॉफी जाओ